टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आज जो है फिर आपका जो एथिक्स का स्पेशल सेशन चल रहा है उसका सेकंड क्लास है। तो सर अब क्लास लेंगे, उसके बाद फिर आप लोग के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं करिएगा। नहीं, क्वेश्चन आंसर इनको शुरू से मैं इन्वॉल्व कर दूंगा। और फिर हम लोग ऑल योर्स। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था ना कि अब मुझे कहा गया कि यहीं खड़े रहो, अब ये बड़ी मुश्किल हो गई। अरे मुझे मन करता है कि थोड़ा उधर को टहल के जाऊं, इधर को टहल के जाऊं, कुछ नजदीक जाऊं तो कुछ पता चलता है ना, कुछ बातचीत करने में अच्छा रहता है। जब भी आई टीच एनीवेयर एल्स आई जनरली वॉक अराउंड। अब यहाँ इन्होंने मुझसे कह दिया है बिल्कुल कि आप बिल्कुल जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिएगा, हिलिएगा मत एक सेंटीमीटर भी। बता रहे हैं कि ये कैमरे से ऑनलाइन जाता है एंड देयर अबाउट, और आज जैसे कम बच्चे आए हैं तो बता रहे हैं कि many of them might be attending online, so therefore I have to stay fixed out here. तो ये मेरे लिए एक बंधन हो गया, कोई बात नहीं। Anyway, okay, so we did something about ethics in the last class, and we did some case studies. 3 case studies we discussed from 2019 that had come, and I also told you something about basic concept of ethics in the beginning and what ethical कॉन्सेप्ट्स आर। तो आज तो हमने कहा था थोड़ा केस स्टडीज को ही आगे बढ़ाएंगे, जस्ट टू डिस्कस, बिकॉज आई वांट टू, द थ्योरी पार्ट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट आल्सो, एंड इफ यू रीड द बुक जैसे आपने कहा था, दे मेकिंग इट अवेलेबल टू यू। हमारी वाली बुक जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन अभी उन्होंने बताया हमें, दे ऑलरेडी प्लेस द ऑर्डर एंड इट विल कम टू यू। तो इफ यू कैन रीड दैट इज रिटन इन अ मैनर, पूरा सिलेबस के हिसाब से लिखा हुआ है, यू विल बी एबल टू फॉलो एवरीथिंग। एंड देन इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन वी विल डिस्कस, कभी आगे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या कभी एक आधा टॉपिक को ले लिया करेंगे, उसको हम उसमें कर लेंगे हैंडल। बट टुडे आई विल फोकस ऑन दिस 2022 हाँ केस स्टडीज। तो प्रोजेक्शन कर रखा है, वो उठाओ ना, वो वाला खोलो, केस स्टडी खोलो। ये तुमने क्या खोल रखा है सेक्शन, ये थोड़ी खोलना। अच्छा ये वो नहीं है उसमें चलाने वाला यार, तो ये कैसे इसमें चलाएंगे हाथ से? ओके, वो एक वो लेना चाहिए ना, एक वो ले लीजिएगा, that is much easier. नहीं और आगे बढ़ाइए। तो आपने तो पता नहीं क्या आपसे कहा था लगा दीजिएगा आपने तब से। हाँ ये है, पहले से लगा लेना चाहिए ना, जब पीपीटी के साथ उसको लगा लेना चाहिए था, इतनी देर से भेज रखा था। ओके, दिस इज द केस स्टडी फर्स्ट वन, नो? ओके, किसी ने पढ़ा है? अच्छा चलिए, तो कोई ऐसी बता दें शॉर्ट में, पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, वो तो रीड सभी कर लेंगे। तो थोड़ा और ऊपर उठा दीजिए, हाँ रीड कर लेंगे। तो व्हाट इज द केस स्टडी अबाउट? हाँ, एनीबडी विल लाइक टू से? हाँ यस प्लीज। यस, the company is suffering CPU losses, and they have been asked to appoint a person approaches him to get appointed as a manager, and he assures the company is filing for a bid which is related to defense center. So they have to file it with the government. Right. So a person, the guy who has approached him for the managerial post says that he can disclose some information which are very crucial, so that we can win that bid. right, Now, right. the person named 𝘀𝗶 is in a situation that whether to hire him or not to hire him, because there is conflict of personal ethics and professional ethics. Right. I mean, if he hires him, he can win the bid. Oh. But this is that. This is not for national interest or national security. Right. Right. So first thing, she's right, she said that, I think she very short, she has brought it out. So actually, once again, as I said, when you approach a case study, you should first go by what are the keywords. वो keywords को पहले देख लेना चाहिए केस स्टडी का, because जो questions follow करते हैं ना, वो उस keywords accordingly you have to give your answer. So like if you go through the case study, what are the keywords? That Prabhat is okay, vice president is a senior person in a marketing, but the company is going through difficult times. It is not profitable. So that is the first keyword. He must understand that his company at the moment is not being very profitable. ये आप दिमाग में रख लीजिए। तो इसको मतलब
that means ki they would like to do things, get orders, get offers, so that they become profitable. That is the first thing. And what are they trying to do? To procure some big government order. That is second thing. They want to procure some big government order, उससे उनकी financial health जो है वो improve हो जाएगी. और उनके जो bosses हैं वो इन वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर भी डाल रहे हैं कि भाई जल्दी कुछ करो, improve the performance. So he is under a lot of pressure also because his job may be on stake. If he doesn't perform and the company doesn't perform well, he may lose his job or he may not get promoted or whatever else may happen. उसने अश्योर कर दिया कि साहब मैं एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नॉट आल्सो की डिफेंस मिनिस्ट्री. ये मेंशन करने को एग्जामिनर कोई भी और मिनिस्ट्री मेंशन कर सकता था. He could have said Ministry of Health, he could have said Ministry of Education, but he has mentioned Ministry of Defense. Why? So defense means very sensitive. Whatever the contract is a very sensitive nature related to the country's defense. तो ये इसलिए कीवर्ड्स इसलिए बताता हूँ कि केस स्टडी में इस कीवर्ड्स को पकड़ना चाहिए बिकॉज एग्जामिनर का माइंड इससे आपको पता चलेगा व्हाट इज द एग्जामिनर थिंकिंग एंड व्हाट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एज एन आंसर. तो ये डिफेंस वाली बात पकड़ लीजिए. उसके बाद वो कहता है कि ही इज अंडर प्रेशर एंड उनका डिवीजन क्लोज हो सकता है और अपने ल्यूक्रेटिव जॉब को ही मे लूज हिज ल्यूक्रेटिव जॉब. इट इज कॉजिंग हिम डीप मेंटल टॉर्चर एंड एगनी, मतलब ही इज मेंटली डिस्टर्ब्ड आल्सो. ये भी क्लियर. एंड अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में जो आ रहा है, ही हैज अ फैमिली विद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड फैमिली इश्यूज. सो इफ he doesn't get his regular salary, his children and his family will be in trouble. So that is the next point which comes in mind. तो इसका मतलब कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है टू परफॉर्म, है ना. उसके ऊपर बहुत प्रेशर है टू परफॉर्म बिकॉज हिज जॉब डिपेंड्स अपॉन इट एंड ऑन हिज जॉब डिपेंड्स हिज फैमिली एंड देयर एजुकेशन एंड एवरीथिंग एल्स. नाउ ही सुभाष वर्मा आ जाते हैं. वो कहते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ मैनेजर. So he introduced Mr. Subhash Verma and he found him to be sound, resourceful and experienced marketer. मतलब he ऐसा नहीं कि technically he is not good. Subhash Verma in the interview has technical knowledge. He is sound technical knowledge. He is a good marketing person. He impresses with it and he can do good liaison. Tender procedures को भी जानते हैं वो. तो काफी लंबी ऐसे केस स्टडी है, जरा तो ज्यादा लंबी है ये वाली. Normally इतनी लंबी नहीं आती. They give shorter case studies. But in this, I think the examiner has put a lot of things. So now, अब सुभाष शर्मा क्या कहते हैं कि वो जो आपके ओपोनेंट बिड डाल रहे हैं उसकी मेरे पास कॉपी है, ये कह रहे हैं ना. हाँ, एंड आई कैन मेक इट अवेलेबल टू यू इफ यू वांट. मीनिंग देयर बाय कि आपको मालूम हो जाएगा कि आपका कॉम्पिटिटर क्या बिड डाल रहा है, तो यू कैन पुट अप अ बेटर बिड देन दैट. जैसे अगर फाइनेंशियल वो होता है ना कि गवर्नमेंट में होता है रूल कि लोएस्ट को दिया जाता है. Once you are technically qualified in a bid in government, there are two process. किसी भी चीज के लिए आप bid करते हैं गवर्नमेंट में, normally there is a technical bid and there is a financial bid. Technical bid को पहले देखते हैं कि जैसे कि आपको technically वो चीज बनाने की काबिलियत या competence है या नहीं है. Okay, that's the first thing. Whether you are so and whether you have the right number of manpower, whether your financial health of your company is good or not good. On that basis, technical qualification is done. And those companies which qualify technically, say 5 companies qualify, 10 companies have made a bid, only 5 companies qualify technically, other 5 are eliminated. Only those who qualify technically, उनका खोला जाता है what is known as the financial bid. Financial bid means कि आपका प्राइस क्या है, हाँ कितने में काम करेंगे आप. और वहाँ गवर्नमेंट का रूल है बड़ा क्लियर, ये चीफ विजिलेंस कमिश्नर ने ही बनाया है. सीवीसी का जो है रोल करप्शन दूर करने के लिए उन्होंने रूल्स बना दिए हैं बिल्कुल, कि ऐसा नहीं कि आप किसी को भी दे दें. Then corruption will come in. If you can give to anybody, then it is corruption, isn't it? When you give it to the lowest, जैसे कहते हैं L1. तो L1 अगर ये इनको मालूम हो जाएगा कि जो यूनिक वाले हैं वो क्या कोट करने जा रहे हैं, पता चल जाएगा, then he can quote less than that. And if he quotes less than that, then he will win the bid. So that way he comes in a position where he can win the bid on the basis of the information Subhash Sharma gives him. But he is worried कि मैं क्या करूं. He is amazed at सुभाष वर्मा को ऐसी नॉलेज है, कैसे मालूम है उसको इतनी सीक्रेट चीज. और ये इसलिए मालूम है कि वो शायद सुभाष वर्मा उस कंपनी से रहा है, एसोसिएट रहा है. बट ही इज विलिंग टू शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद हिम. नाउ दिस इज कम्स इन एंड so he is wondering whether he should take this person on a job, और कंडीशन ये रहेगी अगर इसको जॉब पे ले लेता है तो he can win the bid. That's right. So this is the basic case study. So what is the first thing?
Discuss the ethical issues involved in the case. तो बताइए ethical issues क्या होंगे इस केस में? हाँ, corporate ethics का? हाँ, why? हाँ, मतलब he was in some other organization, but he should not have shared that information with him, but he is willing to share that. That is an unethical act on his part. Subhash Verma के part पे, that is an unethical act when he is saying that I will share that information with you. Normally, when he was in the other company, he should be loyal to the company to that extent and not say that I will share this. And any other ethical issue इसमें जो लग रहा है आपको? हाँ, क्या चीज? Was under the confusion that whether he should accept the Subhash offer and promote his job or probably save his job, and or should he not, because it is a matter of national interest. हाँ, Prabhat's personal issue, right, is that if he can get the contract, he will gain personally. But at the same time, what he is doing is not ethically correct. He is getting the other person's bid from somebody and giving him a job in exchange for that. You are giving him a job in exchange for that. एक तरीके से वो हो गया bargaining, that you give me this, then I will give you a job, and on that basis he can win the bid, which would be of great help to him. But the ethical issue is, should he do that for his personal gain or should he not, because this is something which is, and especially it is in a ministry like defense and all that. और तीसरा जो डिफेंस की बात आ जा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस इतनी जो ऐसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं, सेंसिटिव मिनिस्ट्री से, हाउ इज दैट दीज डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग अवेलेबल एवरीवेयर एंड हाउ दिस पर्सन इज विलिंग टू गिव दिस डॉक्यूमेंट. ये कई चीजें इसमें आ जाती हैं एथिकल इश्यूज. सो एथिकल इश्यूज, वन इज फॉर प्रभात, whether he should go in for that or not and gain personally. Second is the issues of Subhash Verma, corporate ethics, whether he should have said that I can share these documents with you or not. And third, that he is bargaining for a job on that basis. That is another ethical issue. You can't bargain for a job like that कि आप हम ये दे देंगे तो मैं आपको ये दे दूंगा. Otherwise, I will not give it. Now that's kind of also very unethical way. And for him also to select such a person. The next ethical issue is to select such a person. ये देखिए ना, if that person is behaving like this with the other company, he can do like that with you also. What does it show about Subhash Verma? It shows that Subhash Verma is not a trustworthy person. That is the next ethical issue. Subhash Verma is not a trustworthy or an ethical person. Yeah? Because he is doing it to them, he will do it to you tomorrow. जहाँ उसको कोई better salary का offer मिल जाएगा, वहाँ चला जाएगा, या आपका document लेके बाजार में बेच आएगा. He can do anything. You know, that kind of thing. So this is very, very dangerous. So that it shows something about the personality of Subhash Verma. He may be technically competent and a good marketeer, good liaison man, but he doesn't seem to be a man of ethics. So these are the various ethical issues. जो पहला चीजें कह रहे हैं, discuss the ethical issues involved, meaning you mention the issue and discuss in 1 or 2 lines, because आपको word limit भी होती है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए you discuss that why. जैसे उन्होंने कहा corporate, I asked her why. You have to mention in 1 sentence why you think it's an issue of corporate. Then about saying about why he is not trustworthy because he is doing this. Why it's matter of personal ethics of Prabhat because of this reason. So you 1, 2, 3 करके answer में list this out. That is the first part of your answer to this question. So now we have understood what are the ethical issues which are involved. Now critically examine the options available to Prabhat in the above situation. So what are the options? Alternatives क्या है? Prabhat, अगर आप प्रभात होते, what are the options before you? मतलब bid नहीं. Right now you have to, your first thing is whether you want to appoint. The ethical first issue before one option before. We should not appoint that. No, that is come later. That first, no, you're right. But मैं कह रहा हूँ, when you go for the paper, what he says is critically examine the options. So first of all, list out the options and then critically examine them, है ना, एक एक करके. तो पहले options को वो कर लीजिए. हाँ. If I'm the manager, I've been having this only option with me. So can I state this particular option straight away without listing? No. List out the options first. You may not agree with the other options. Mentioning it in the answer. Telling the thought process, but he wants to know your thought process. This finger linked to one particular statement, then. That's all right. You reject the other one. That is important. That is why I'm saying, अगर आपने एक ही दे दिया ना, then you will lose marks.
Because he is saying critically examine the options. He is not saying what course of action you will choose. तब तो आप एक बता दीजिए कि this is what I want to do. But he is not asking that. He is saying critically examine the options. The options are that he may select Subhash Verma for the job and take that in exchange for that bid document. Second is that he may reject Subhash Verma and say, no, I will not select you. In that case, he loses out on his job and he goes for a fair bid in that case. The third could also be that he says, okay, I will select you, but I will not take this bid document from you on that basis. So these are some of the 2-3 options which you can list out, which are course of actions which are available to you. Now, if these are the options which are available to you, as he is saying, you want to choose the option that should be rejected. So, आप पहले ये लिखिए कि yes, you can say that it seems to be very clear that if I hire that person, it will be doing something which is compromising with the security of the nation and unethical personally and professionally also on my side to try and get the bid of the other person against the corporate ethic. So that is why this option is not available. Second option is, okay, I don't take the bid document and still select Subhash Verma. But that also you will say that this person is not a trustworthy person. Even if I don't take the bid document from him and I select him, this kind of a person does not have a trustworthy or a personality on which basis I can select him for the job. So I will not select him. And third is, I reject him and the consequences I am willing to bear. And what are the consequences willing to bear? Next part of पूछ लिया उसने, which of the above would be most appropriate? देखा आपने third part में. So out of these options, when you are saying this is the most appropriate and why आपने दे दिया? Because of the ethical concept, security of the nation, personal value system and ethics of Prabhat, corporate ethics, all these things involved. You have only one option which seems to be coming out very clearly is that you do not select Subhash Verma. और इसमें आप mention कर दीजिए कि इसमें repercussion ये होगा कि it could be possible that you may not win the bid. It is possible that you go for a fair bid, but you do not win the bid. And if you do not win the bid, then maybe then your job is in danger. But at the same time, here is where you have to say that you cannot compromise on these things. That is what ethics says. You cannot compromise on these things. Even why there may be some other tenders will come. Maybe you can get some other tender or win some other contract. And maybe you don't win this contract, you can win some other contract. Or even if worse comes to worse situation comes, that your job is threatened. Still, ethics says that for personal gain, you cannot sacrifice public interest or national interest or ethical concepts. You cannot reject or cannot ignore that. So that is the point. So that is why this thing can happen. यही होता है life में ना, when you say ethics actually is personal gain versus public gain, as I told you last time. So very often the question comes in life is something, your personal interest, you are getting something advantage, but public interest is not being met. So that is not the course of action to take. You take the action which is in public interest, even if personally it is not possibly suiting you to that action. As I told you in life, it happens so many times for a civil servant that he may get an offer from somebody. ये जो contracts की बात आ रही है बहुत आती है life में. आते हैं लोग आते हैं कहते हैं साहब हमको contract दे दीजिए, and then they offer all kinds of things. I can offer you this, I can offer you that if you give me a contract. You see, so now personally you may gain by giving that contract to that person, but professionally you realize that you have to have a fair process and a fair selection and fairly select the person who is the right person and give that contract to him who is the best person, and also not accept anything from anybody. So these kind of dilemmas which come in life always as for a civil servant, that is why examiner ने ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही उससे दिया है. और ये देखिए ये भी कह रहा है बीच में कि he was a better choice than other candidates. तो here भी बात आ जाती है कि when you don't select Prabhat Verma, then whom will you select? You need somebody. Maybe you will select number 2. So you are actually selecting the second best person here, but he is at least ethically a correct person. He may not be technically so competent. So here you have to decide between technical competence and ethical. वो last time हम लोगों ने case study की थी, if you remember, no, about that marketing expert who had raised the sales of the company, but he was not behaving properly with lady employees. There also the same thing was there. That by losing that officer or manager, maybe your sales will come down for some time, but overall the work culture will be good.
The women will be willing to work in your company. It will be a good work culture, and eventually you will gain. And that is the ethical way to do. So here also, you may have to go for a second choice, and not the first choice, which may not be the best or solution, but you still go for it because that is a better or more ethical thing. So basically, what happens is sometimes that कभी-कभी ये conflict आती है कि what is ethical and what you think is. Sometimes people may say within inverted comma practical. Practical means gaining benefit or getting something. और तो ये बहुत लोग कोशिश करते हैं यार. ये bid वाला भी ये तो defense का है. Defense तो खैर बहुत sensitive है. But in reality, I will tell you, it does happen that competitors try to find out the bid of other people. Whenever there is a tender, they try and find out कि अरे वो उसका आदमी क्या bid दे रहा है जरा पता लगाओ. And there they make, have some relations with the employees at that level who are handling the tender documents, and somehow that employee for some consideration leaks out कि भाई इतने पे bid आ रही है तुम इससे थोड़ा नीचे दे देना, something like that. When he gets that information, he accordingly bids. तो ये भी चीज होती है. Many things happen, and not only this, many things happen. Like आजकल शुरू हुआ है recent trend because people said that GEM portal आपने सुना होगा नाम, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सी दैट देयर इज नो करप्शन इन टेंडर डॉक्यूमेंट्स. प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ करप्शन बिकॉज़ एवरीथिंग इज ऑन ई मार्केट प्लेस and you just make your bid out there, you don't know anything further, and your evaluation will be done in a fair manner. So evaluation is done in a fair manner, that is all right. But what happens these days, what the people have started doing is, wo specifications of the product are designed so to only favor, say, a company. Only a company will succeed in that tender, and that a company is able to influence कि भाई tender document should be prepared just like this. ऐसे ही बना दो, जैसे हमारा प्रोडक्ट है उसके मुताबिक बना दो, just like that. And so only that company will succeed because their product matches the requirement. So these kind of things also happen. So this is also unethical. This is also unethical. It is not should not be done like that. It should be fair. It should be open to all. So okay. So this was, I think we discussed the first case study. Then we can go to the next one. Next one is about some Ramesh who's a state. चलिए बताइए what is this about? Somebody will tell me in short, just like you tell me in short. हाँ. सर इसमें एग्जैक्ट आगे थोड़ा सा केस स्टडी में देख लीजिए. ये है ना, अरे उठाओ ना, वो आपको वो लाना चाहिए जो हमने किया था. हाँ ये देखते जाइए. गो अहेड. सर रमेश एक स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर है, बॉर्डर स्टेट में पोस्टेड है, और वो 20 इयर्स की सर्विस के बाद उसकी वहाँ पोस्टिंग हुई है बॉर्डर स्टेट में. रमेश की मदर जो है वो उनको अभी पता चला है कि वो उनको कैंसर है और वो वहाँ स्टेट के एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट है. उनकी 2 एडोलसेंट चिल्ड्रन है जो कि अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं. राइट. और आफ्टर द अपॉइंटमेंट वहाँ जब उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, उसको एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मिलती है इंटेलिजेंस सोर्सेज के द्वारा कि वहाँ पे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है स्टेट में जो कि नेबरिंग कंट्री से आ रहा है. Right. He decided to personally carry out surprise check on the border post Right. with his home department team, and he caught their red-handed two families of 12 members infiltrated with the convenience of the security personnel border Right. post. On further inquiry and investigation, he found that the migrants have also not having Aadhaar card or ration card, voter ID cards. Right. And Ramesh prepared a detailed and comprehensive report about this. And when he sent this report to the superior The officer, superiors, yes. so superior officer forced him to withdraw this report. Right. That is the thing. Again, everybody understood the case study, no? Very clearly. Now, what are the options available to Ramesh as the director of the Home Department of the bordering state? So, what options should Ramesh adopt and why? Critically evaluate each of the options. What are the ethical dilemmas being faced by Ramesh? So, ये first ABCD जो है questions वो linked हैं. They are all linked to each other. But when you answer, you have to answer ABCD करके करिएगा. Link उसको mix मत कर दीजिएगा. Because examiner is saying ABCD, so like he's saying what are the options available? So first of all, in A part you give your answer on what are the options available. B part you say which option you should adopt and why. So in that
every option should be discussed. You reject the option which you don't agree with, giving a reason, and accept the option, giving a reason, and that is what is critical evaluation. Okay. Now, what is the situation before Ramesh today? What are the options available to Ramesh? That is option number 1, because his boss says you withdraw the report. He agrees to his boss and withdraws the report. Second option is that he says no, I will not withdraw my report. Higher authorities के पास direct transfer कर सकता है अपने report. Third option is he can possibly move to still higher authorities and say कि साहब this is the situation and I will like to put forward. He can go, because his boss is saying this, but he may like to go beyond. These are the options available to him. These are some of the options which are available to him. And what is his situation? Ramesh's situation is that he has been transferred there, but he has some issues also, personal issues. His personal issues are that his mother has been detected with cancer and is admitted in leading cancer hospital. Then also adolescent children have got admission best schools. So he needs to stay where he is. It is important for him personally to stay where he is. But now when you evaluate the options, मान लीजिए, let us go by first option. He accepts the report. So what does it mean? He accepts to withdraw the report. What do you write? सर अगर वो withdraw कर देगा report, उसको नहीं पहुंचाएगा report को, तो सर वो national integrity के national security के खराब है, वहाँ पे infiltration बढ़ता ही जाएगा और जिससे crimes वहाँ पे बढ़ेंगे, drug mafia. So he will be working against the national interest. He will be working as a national delinquent and he will not be doing his job properly. He will be endangering the security of the nation. So that is an unethical thing for him. It is an unethical thing for him to do. He cannot do that. So that option is ruled out. Now, second, you said he can go to the boss or somebody else superior. Now that is also possible, but in government sometimes it becomes very difficult. Or why in government, even wherever you work, you can't go bypassing your boss to the top. Because होता क्या है, फिर वो top के पास भी आप जाएंगे तो top वाला भी boss से ही पूछ लेगा, हाँ कि भाई what is going on. So the boss at that time he may remain quiet, but he will develop a kind of a grudge against you. So later on he may penalize you. So this kind of situation is also possible. So that option is there, but it is not always the easiest thing for him to do. But third option is he has given his report in writing. अब writing में report तो जा ही चुकी है, and he has despised the report. So he should say, sir, I have given my report in writing now. No, it is not possible. Now it is, once you have given something in writing, you can't withdraw and say I have given something wrong. I based it on based to evidence, so I don't withdraw it. So that if he takes that stand, then what will happen? He can suffer personally. He can suffer personally because that officer will be annoyed. So that officer can transfer him from there. So and he is very happy out there. His children are studying. His mother is admitted in the hospital. He may be transferred to some XYZ place where he doesn't get these facilities. So personally, on the personal front, he suffers. Right? So that is the next question he is asking. What are the ethical dilemmas? Ethical dilemma यही होता है. Dilemma ये है कि हम अगर ये करते हैं तो हमारी personal life is going to get affected badly. But if I don't do it, then क्या होगा? This is the other option. National interest and all. Both things are there. Right? One is national interest, national security. Other side is my personal interest and my personal things. So here he has to make a choice. That is the ethical dilemma that he is being faced with. And therefore the answer is that yes, he has to say that I will stick to my report. ये गवर्नमेंट में होता है. कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत enthusiastic young officer हैं और आपने वो कह दिया and you give some kind of a good report which is very correct report. But people don't want that report. People say you take it back. This is not acceptable. Don't say these kind of things at all. Don't mention that in your report. So अब ये आ जाता है कि भाई should I tell the truth or should I compromise? So very often अब देखना पड़ता है उसमें again कि what is involved. अगर कोई छोटा मोटा compromise है तो one for the sake कर लिया थोड़ा बहुत. One can't keep fighting always in life. You can't be an officer who fights with everybody. But at the same time, if the compromise is of a large degree, which is basically against ethical system completely, then ethics says that you should not agree to that. That is the ethical conduct of an officer would be that no, this is the right report. How can I withdraw it?
I have gone to the field, I have done research, I found out that these ration cards and other things are all forged, Aadhaar and everything. So they are here, and this is causing great danger to the nation, and it will lead to more crime, more drug mafia, more so many kinds of things. Therefore, this report has to be there. So once he does not withdraw his report, the government will be forced to act on his report. ये उसकी saving grace हो जाएगी. ये तो है कि that officer may not like his report, but it is not that government will then can take action against him easily, because when you give such a damaging report, the government cannot ignore this report. They will have to take action on this report, and when they take action on this report, तो ये बात अपने आप ही जो है आपके support में आ जाएगी. That you have given a factually correct report, and the government is also supporting this. So then it also is, I don't think it is very easy for government to take action against you also, or they cannot. अब वो अंदर की बात अलग है कि वो बॉस कोई दिमाग में चीज रख के बैठ जाए कि इसने मेरे कहने से नहीं मानी, या अगर गवर्नमेंट के बहुत हायर लेवल से भी बात आ रही है politically भी, तो मे बी देन yes. But worst, what can they do to you in government service? In government service, worst is transfer. If you are protected, you can't be thrown out of a job. Unlike private sector. In private sector, if they don't like your face or your work, they can throw you out. In government, it is not easy to throw anybody out. Best you can do is transfer. हालांकि ट्रांसफर से भी परेशानी हो जाती है, इसको बता रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मदर इज इन हॉस्पिटल, सो इन from Lucknow if you are sent to Balia, you are in trouble, you face personal trouble, but still it's a transfer, and transfer can be 1 year, 6 months, 2 years, you can again come back, or things can happen. So these kind of things, but should be, in government service one has to be prepared to face this, if one has to stand for ethical standard. ये ऐसा नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है, there's political bosses, they try and tell you to do, or minister will tell you कि नहीं ये इसको ऐसे ही करिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे कर दीजिए, and you think this is not right, this should not be done in this manner, and he says no, you must do it in this manner, and you think this is ethically incorrect. So you have to there take a stand. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे एग्जामिनेशन पेपर में, where somebody is putting pressure on you, higher up, a political boss or your boss, to do something which is wrong or unethical, but your value system tells you no, this is the right thing. So the paper or the examiner expects you, and this is how you should be as a civil servant also, to take the right path, irrespective of what the consequences are. The consequences can be handled later on, but here in the dilemma you have to choose the right path. You cannot move away from the right path, no matter what the situation is. These kind of things keep happening a lot in life. I have also faced it many times in life. Sometimes when you're writing a note on the file or something, तो ऊपर से कहते हैं भाई इसको ये ना लिखो, don't write this. They no, but this is the fact. So if this is the fact, then you write it out. And if you put it in writing, government में ये होता है कि if you put anything in writing, then it stays there, and then action has to be taken on that basis. People will take action on that basis. That is the whole thing. So you should not be afraid of writing what is right thing or putting forward what is the right report. That is the thing. So I think this is what we discussed. We can go to the next one. He says something more. He says, what policy measures will suggest to combat the menace of infiltration of illegal migrants from the neighboring country? This is a general thing he is asking. कि infiltration जो हो रहा है, इसको आप क्या policy बनाएंगे? So now you can suggest common sense से. ये कोई कहीं किताब में नहीं मिलेगा आप. Think, what can you think? What should be done? Border management system जैसे roads develop करेंगे, fences लगाएंगे. हाँ. और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ड्रोन्स वगैरह और सैटेलाइट. हाँ, technology, so you can do a lot of border patrolling, border monitoring. You can use through drones and other systems to see that people are not coming to this side. Then you can have border meetings with the other side, and both countries can jointly prepare an action plan. That both countries can do it. That can be border meetings can be held. Then also ये इस पे भी जो इसने कहा ना कि these their documentation like Aadhaar card, ration card, voter card are also forged. Now there also some action can be taken by the concerned departments. By the election department issues voter card, ration card by supplies department, Aadhaar card by the UIDA, that they should see that these forged cards are somehow controlled. So policy measure, and that can be done technically. Technologically you can do that by checking, or you can be having a regular checking of these cards in that area to see that no forged cards are not available.
So these are some of the measures you can suggest what can be done to stop infiltration in the future. So this kind of an answer, 250 words में देना है, 250 words is not much. थोड़ा थोड़ा ही लिखना पड़ेगा. A, B, C, D, E सब मिला के 50-60 words for each. So that is how you can come with an answer. Now you get the point, no? This is how you answer. That is how the approach should be. So it is not very, why I was saying it is a very easy paper. इसमें आपको कॉमन सेंस नहीं यूज करना है अपना. वो थ्योरी तो हम बता देंगे आपको, उसके दिमाग में रहनी चाहिए. But you know what is inside your conscience, you know what is the right thing to do. And that is the right thing to do, you follow that. And if you follow that, your answer will be the right answer. You only have to justify it properly. And justify it and go to each and every word that is mentioned in the case study and evaluate each and every word that is mentioned. That becomes very, very important. Okay. Now we can go to the third one. That's about Supreme Court has banned the mining in Aravalli Hills. बढ़ा दीजिए भाई. Now what is this? What are the issues in this? Somebody can just see this and tell me, huh? बढ़ाई. I will suggest to them कि वो एक दे दे. वो होता है ना, उससे आसानी से हो जाता है. Okay. Now anybody can volunteer and read this and tell what is. ये आपके सामने हो तो वो या इसको पढ़ के बता दीजिए. आप बताइए प्लीज. Yes. What happened actually was in that particular area, this is banned for the mining. Right. So, a new IAS officer gets appointed at that particular place and he gets to know that the truck is being transported in the night. So he tries to stop the truck. In that particular case, what happens is he loses life. But two daughters of rights of the majority and the even West, there was no subsequent Right. pickups on the same as to what actually happened in that particular place. So a media person himself took on the suo moto. As to that, I'll be taking on the lead and I'll be investigating this whole case, and to his own surprise, he got to discover some of the names of the local SLA to be specific and some of the other persons to be involved, specifically his relatives, in that particular arrangement of the conspiracy. Let's say the accident which actually happened. So he went to this CEO of the company, CMDI. So he showed him the whole story. So the next thing which came in the mind of CMD was that this could be a chaos, as the 20% of the shares of that particular company, the media house, was being held by that particular person being actually accused. So now that he gives an offer to the person who actually reaches and has done this whole investigation. So when he reaches to that particular person, he says that you have a loan of around 10 lakhs. If you do not take care of that, be taken care of, and your promotion and a salary hike will be given to you. You do one thing, you give me these documents, just forget about it. So that's the issue. So that is the issue. Yes. So basically, again, the same kind of situation. What is happening is that is a Supreme Court order, and there are Supreme Court orders are there that no mining should be done in sensitive areas of hills and Aravalli hills and everything. The Supreme Court has given these orders. That is a matter of fact. So if mining is being done, it is illegal. That's the first issue that is getting involved in this. Now, mining is being done by, it is illegal mining is being done. That is very clear. Now, illegal mining is being done and a young officer gets posted, police officer. He does the right thing. The police officer has done the right thing. Then he starts taking action against that. He starts checking, finding illegal mining going on, trucks going on. He takes action against those people. But अब ये भी होता है कि they are mafias. They are gangsters, mafias. So they do such things. उन्होंने वो गाड़ी चला दी, पुलिस ऑफिसर के ऊपर चला दी. अब बाद में कोई क्या कह सकता है? कहेंगे वो तो एक्सीडेंट हो गया. But they did away with him. They do that with honest officers sometimes. The mafias and others, they behave in this manner. So he's lost his life in this process. तो आपने पता नहीं उसका मंजूनाथ का केस पता नहीं सुना होगा, सुना होगा. Famous case of Manjunath. He was an IIM graduate who joined in his Indian oil company, and he was posted in UP, and he found that in this petrol pumps and all there was massive adulteration with petrol that was going on, and there was a mafia gang operating which was adulterating the petrol and diesel that was being supplied. So he started taking action against that, but the mafia immediately ganged up against him and he was killed. That the thing happened against him because these people are quite very strong people. So sometimes they react against you. They act against you. So this kind of situation happens. So this poor police officer, he lost his life. FIR was lodged, but nothing has happened.
Nothing has happened means what? But उसके behind क्यों नहीं लिया गया action? हाँ, because some big people are involved in this. He's saying ना, local politician, local MLA is involved, strong politicians are involved, other strong people are involved who have influence. So they don't allow any action to be taken on the FIR. जब FIR पे action नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब हुआ, naturally इससे मतलब क्या निकला कि उसके बाद जो next police officer जाएगा, वो क्या सोचेगा? He will say, keep quiet, यार. What is the point? Huh? Why should I, risk my life? Keep quiet. If something is happening, I will just look the other way. I will behave as if nothing is happening. I am not aware. ऐसे कर लेते हैं. Many people compromise like that. In police officers in particular, उनके अगेंस्ट crime हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ nexus है, and that criminal is very close to the political people at the top or something, they just ignore his activity. Just keep quiet. They keep taking action on other things, but they will ignore this. But यहाँ इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? एक जर्नलिस्ट आ गया, and this journalist is a very conscientious journalist, appears good investigative journalist. He is gone around, he inquires in everything, he collects all the material, collects all the photographs and everything, and on that basis he writes a story. And that story can be damaging because he says that local MLA is involved, the local officers are involved, he says all the big politicians are involved, all these things he is saying in that report. So story point of view से तो ये बड़ी गजब की story है. कोई भी टीवी चैनल होगा या कोई भी न्यूज़पेपर होगा, he would be very happy to publish this story or broadcast this story because वो तो एकदम उनके TRP भी बढ़ जाएगी because it is something people will like to hear. अरे ये हो रहा है, it will be very exciting story for somebody to hear. But इसमें कहानी कहाँ गड़बड़ हो जाती है? Yes, और वहाँ पे the CMD of the company says that ये तो local MLA का तो शेयर है इस कंपनी, और आप local MLA के खिलाफ रिपोर्ट दे रहे हो. He has share. So what the local MLA will say? That CV company will be in trouble. It will be in great trouble. What to do? And then he also says कि भाई तुम लोन ले रहे हो 10 लाख का, तुम्हारे पर्सनल इश्यूज जो हैं उसको हम हैंडल कर लेंगे. Your son is having a chronic disease. You need to treat him. So we will give you money and we will look after everything. But just give this report to me. Just give this report to me so that he can destroy the report and the matter comes to an end. Now the journalist, as he is concerned, the option for him, of course, again, number one, that he drops the report, just gives it to him, khatam mamla. But that is an unethical option because he has done so much of work and he's found that something, and because of this, a senior police officer has been killed also. Such a serious thing has happened, and if he now compromises, he is not being an ethical journalist. He is not being true to his profession and also not true to the nation and the society. So therefore, this is not a good option. So what is the option before him? Continue with this report. लेकिन वो तो लेने को नहीं, वो तो दिखाएगा नहीं टीवी वाला. Yeah. He हाँ. पर्सनली किसी सोशल मीडिया के द्वारा पर्सनल चैनल से वो पब्लिश कर देते हैं. No, this is an option because even if he says that no, I will not give you the report. So what happens? It will not be published. If it is not published or not broadcast, then also that dilemma is nothing is achieved. So he has no other option but to either give it to some other person, some other channel or some other who is willing to broadcast it. जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो broadcast कर दे, उसको वहाँ जाना पड़ेगा. और as you are saying, maybe he uses social media or some other medium to do it. So this is the third option before him. For him now, he has to bring the truth out. Ethics says that he has to bring the truth out in front of the people. But he has to see how to bring the truth out. बल्कि क्या होगा जब वो कहीं और के पास भी जाएगा तो सकता दूसरा आदमी भी ना तैयार हो, तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है वो. But as a freelance journalist, he can still, up to there are options available like social media and all through which he can bring the story out. And once he just tweet कर दिया या Facebook में डाल दिया या YouTube channel से कह दिया, if you can just put the story out, it becomes viral. And once it becomes viral, then nobody can control it. Nobody can control that information. So that perhaps is the only option which will be available for this journalist to do, because he must bring the truth out in front of people. Only then will the government be forced to take action, the police will take action. अब वो भी ये है कि कितना एक्शन लेती है. Yes. He can go to the court because he has banned the mining of the forest cover. So he can go to either of the local district courts to file the report and all. Yes, excellent. I missed this point. Good point.
because the first sentence में उन्होंने mention किया है कि Supreme Court has banned the mining in Aravalli Hills, so he can, there is something known as a public interest litigation, PIL. So correct. So वो चाहे तो अपना नाम ना भी डालना चाहे ना डाले, he can just give it to some lawyer or advocate who can file a PIL on his behalf, and the PIL is filed before Supreme Court. Supreme Court will immediately take cognizance and say कि भाई what is happening, ask for a report from the government. तो कम से कम वो ये option भी एक available है, and I think that's a good option. That is perhaps maybe one of the choices which is a better choice for him, because अब social media में भी डालेगा, क्या डालेगा, कहाँ तक पहुँचेगी बात, क्या नहीं पहुँचेगी, but if he can go to the court, maybe that is perhaps the best option for him कि इसको PIL की तरह before the court डाल दें, so that the court takes cognizance, then the government will be forced to take action in the matter. And maybe these, what does the court do in such matters? जो ऐसी बात आती है, and sometimes the government also wants to hide things. They don't tell the court everything truthfully. They try to avoid. Government might try to give a reply, नहीं, everything is all right. We have tried, we found out, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत problem है, we have taken action. But when the Supreme Court starts feeling कि no, something is going on, they say no, order CBI inquiry to be monitored by the court. So CBI inquiry which the court will monitor. तो फिर CBI को भी सही report देनी पड़ेगी, because court will monitor. Court will ask CBI, but what have you done, why, how? So I think this kind of a situation is perhaps even the best option. And second, of course, option of course is to go to some other channel who is supposed to broadcast it, or use your social media channels to bring the story out in public. So these are some of the options which are available to you, which you can choose to do. But what you should not do is compromise for the sake of getting 10 lakh rupees loan, for the sake of giving up on whatever investigation you've done, because it is something very serious which is happening in the country, and it is damaging, the entire thing out there, atmosphere out there. So even if the local people are involved, you have to take that action. अच्छा, ये आपने देखा होगा, in so many Hindi movies also you see this kind of scene happening, no? This kind of situation that local politicians are involved or senior officers are involved, and one officer जो है, लेकिन वहाँ तो अजय देवगन सबकी पिटाई कर देते हैं, लेकिन अब वो पिटाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. That option is not available कि आप क्या मैं पिटाई कर दूंगा. अकेले you cannot do that, but you have to take action on paper. That's the whole point. You have to see this is happening. In fact, I was just last 2-3 days I was seeing this Netflix पे आता है Railway Man. देखा किसी ने? It's very excellent. 4 episodes. Same kind of situation. Union Carbide में 1984 में gas leak हुआ था, and gas leaks about 15,000 people died in Bhopal. So it is based on that story, and this ये सब चीजें सामने आ जाती हैं. How Union Carbide was hiding the truth. How they were saying, this gas is not poisonous, even though they had reports with them saying that this gas is poisonous, and if ever it leaks out, it will cause human deaths. But they were hiding that report, and are not taking adequate security precautions for their people to work out there, not informing them about them. So there again एक journalist आता है, वो पूरी कहानी वहाँ से निकालता है इसी तरीके से उसमें. Then some railway officers and all, they take action in the matter to save the lives of the people. The administration takes action, and all this thing happens. लेकिन फिर भी उसमें ये हुआ था कि वो उनका जो CMD था, वॉरेन एंडरसन जो था, उनका CMD था शायद, वो इंडिया आया था तो वो प्लेन से ही बैठ के भाग गया USA. He was allowed to go back. Otherwise he should have been arrested and all that. But because of US ने प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर, and the USA pressure, India has to accept that way. The USA is a powerful country to that way. So he went back. तो USA के प्रेशर तो आजकल भी आप सुन रहे होंगे ना, that case about पन्नू पढ़ा? हाँ, निखिल गुप्ता. क्या लगता है उसमें आपको? क्या लगता है आपको उसमें? हाँ. हाँ. नहीं, but do you think ये ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हाँ. Yes. And this quite जो रॉ है ना, रॉ वो यही तो काम करती है. तो there is no doubt कि वो इंसिडेंट तो हुआ होगा. It's quite possible कि इंडिया ने, भाई enemy of India है, somebody who is enemy of India, तो उसको उन्होंने कहा इसको बाहर करो, खत्म करो इसको. लेकिन जो निखिल गुप्ता साहब थे, उन्होंने उसको बहुत ही पुअर तरीके से, वो उनका जो ऑफिसर थे बहुत पुअर तरीके से किया. जिसको उन्होंने हायर किया टू डू दी शूट आउट, वो यूएसए का अंडर कवर एजेंट था. तो यूएसए के एजेंट को पूरी इंफॉर्मेशन दे दी पूरी इन्होंने अपने आप ही, तो इसीलिए प्रॉब्लम में फंस गए. दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस कीप हैपनिंग. But that is something that you are acting for the interest of the country, so it is not unethical what you are doing, because it's part of the country's policy. But anyway, in this one, I think we got all the issues forward and discussed. So this is again, so many issues involved.
illegal mining, environmental issues, police not taking action, one police officer taking action, he is getting killed, no action being taken on his killing also. After such a serious thing has happened, that shows that there is a lot of pressure from the top. अच्छा ये mining जो होती है ना, इसमें always there are mafias involved. There are a lot of mafia because a lot of money in it. There is a lot of money in mining. तो जितने आपको ये in उत्तर प्रदेश also ये जो नदी के किनारे ये होता है ना बालू खनन कहते हैं जिसको, खनन माफिया. There is a lot of खनन mafia in operation because that illegal mining is done because government gives permit for a certain amount of mining, but they do mining much more than that, and everybody is involved. Local police officers, local administrative officers, local politicians, everybody is involved in that whole process and taking a cut of money in that process. तो उसमें जब कोई उसको बंद करने जाता है तो बड़ी सिचुएशन जो है वो कभी कभी खड़ी हो जाती है. एंड सेवरल ऑफिसर्स हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. दे हैव बीन रन ओवर बाय द व्हीकल्स और दे हैव फेस्ड एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. देयर वाज आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, देयर वाज दिस वेरी यंग लेडी ऑफिसर लाइक 𝘀𝗶𝗰𝗰𝗲 नागपाल. शी वाज हैंडलिंग टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इलीगल माइनिंग ओनली, एंड सो वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दिया एंड शी वाज सस्पेंडेड. He was suspended on that, वही सस्पेंड कर दिया. तो वो these kind of things happen, but then she came back. She came back after 1 week and now she's got a name for herself. People recognize her. 𝘀𝗶𝗰𝗲 नागपाल was the person. She took strong action in the matter. Of course, तो वो फिर लोग दूसरी तरीके की कहानियां बताना शुरू कर देते हैं. You know what happens when there are your enemies? This is what you face in administration. The moment they start saying इसने तो अरे वो तो she was asking for money. That is why she was doing this checking. She was saying that I will do this checking and unless you give me so much of money. She was doing this kind of. तो उल्टा शिकायत करना शुरू कर देते हैं. तो उल्टा शिकायत करके जैसे कि आप परेशानी में आ जाए, फंस जाइए और आप ही विड्रॉ कर जाइए, यार कहाँ इस चक्कर में पड़ गए हम. Let me move away from this. This kind of pressure they create in this, you know. So these things happen in life. These are the dilemmas you face, ethical dilemmas. But when you become a civil servant, you have to take action on what is right, what you think is right. You may sometimes face consequences for that, but more often than not, अब मीडिया है, सब कुछ है, इतना नहीं पॉसिबल है कि आपके साथ टोटल इंजस्टिस हो जाए. Everything goes to the media, everything comes out in the open, nothing, and then courts are there, as you said, everything is there. So it is not that you are left without anybody. But then some officers who take action face, like there is one officer 𝘀𝗶𝗰𝗰𝗲 का नाम सुना होगा, सुना है? वो तो in IAS में he has been transferred about 40 times. वो जहां जाता है उसे ट्रांसफर हो जाता है हर 2 महीने में, बिकॉज वो इसी टाइप के काम करता है, खुराफाती काम करता है. When he does something खुराफाती, he gets immediately transferred from that department. He goes somewhere else, he starts doing something out there also. He gets transferred from there also. So this is, he's been transferred more than 40 times in 15 years. Every 3 to 4 months, he is transferred. So that थोड़ा इसमें कभी-कभी वो भी देखना पड़ता है कि बैलेंस भी रखना पड़ता है. You can't go to that extent कि आप जाते-जाते तलवार निकाल लें हर जगह, है ना. जाते जाते आप तलवार निकाल लेंगे तो आप बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे. You know, the similar officer was there in UP once. एक यंग ऑफिसर आया था. वो क्या करता था, wherever he would go in an organization, he would first start a crusade against corruption. And the right thing to do. Corruption should be controlled. So he would start a crusade कि नहीं corruption को मैं खत्म कर दूंगा. और उसकी ये बिलीव थी कि I am honest, everybody else is corrupt. तो सबको इसे कहते हैं ना कि लिटरली स्वॉर्ड निकाल के और सबकी गर्दन काटने में लग जाता था. तो मालूम पड़ा कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में गया, so many FIR, so many charge-sheets, so many arrests, so many this, so many that, तो सारा ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देता. They will revolt against him, and they will revolt against him. तो गवर्नमेंट करती थी इसको यहाँ से हटाओ, हटा के कहीं और भेज दिया. तो once he was, I remember at that time I was secretary to chief minister in UP. तो ये साहब बनाए गए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अपट्रॉन. अपट्रॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन कही जाती थी, अब करीब करीब बंद हो गई है. एट दैट टाइम इट वाज रनिंग, 1990s की बात कर रहा हूँ. अपट्रॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए. 2 ही महीनों में इन्होंने आके अपट्रॉन में इतना हंगामा मचा दिया कि वो वहाँ स्ट्राइक हो गई. ऑल द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ अपट्रॉन वेंट ऑन स्ट्राइक अगेंस्ट हिम कि वो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो. और मांग ये है कि इसको हटाओ, मैनेजिंग डायरेक्टर को यहाँ से तुरंत हटाया जाए इमीडिएटली, अदरवाइज हम लोग काम नहीं करेंगे. तो चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी आया, उनका कुछ कई पॉलिटिकल लोगों ने भी सपोर्ट किया उनको. तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझको बुला के कहा कि इसको हटा दो. क्या बात हुई पता लगा, मैं तो फिर
देन आई टुक अ स्टैंड, आई टोल्ड द चीफ मिनिस्टर कि सर ये हटाना इनको जो है वो ठीक नहीं रहेगा। इसे नहीं वो तो देखो हर समय बवाल करता है, हर जगह जहाँ जाता है तमाशा खड़ा कर देता है, और बल्कि हाँ फैक्ट्री बंद हो गई, सब बंद हो गया, कैसे काम चलेगा ऐसे, सब स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई काम करने को नहीं तैयार है। तो मैंने कहा नहीं बात तो सही है, वो उसने मतलब कुछ ज़्यादा कर दिया है, बात तो सही है, बट मैंने फिर उनको यही समझाया चीफ मिनिस्टर को कि सही ये है कि वॉट एवर इट इज, ही इज अ वेरी यंग ऑफिसर, 5-6 years ऑफ सर्विस है इसकी अभी, वो अभी उसके अंदर ऑनेस्टी का जुनून है, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि है। वो यंग ऑफिसर्स में ही होता है, आगे बढ़ते बढ़ते वो जुनून खत्म हो जाता है। तो कम से कम जब से एज लॉन्ग एज यू आर यंग, एटलीस्ट दैट हॉट ब्लड शुड बी देयर ना, गर्मी होनी चाहिए, खून में गर्मी होनी चाहिए, दैट इज नेसेसरी ऑल्सो। तो ही इज डूइंग इट, सो ही इज डूइंग द राइट थिंग्स। So if we transfer him again and again like this, we will break him. Ultimately, he will break. कहाँ तक लेगा आदमी ना, एक बार होगा, 2 बार होगा, 5 बार होगा, 10 बार होगा, बार बार होगा तो उसकी फैमिली है उसकी, जैसे ये जो इश्यूज आ रहे हैं, बार बार फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, वाइफ कह रही है ये क्या हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, तो यू वंडर व्हाट टू डू। फाइनली यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग, स्टार्ट एडजस्टिंग। तो मैंने कहा अल्टीमेटली विल ब्रेक हिम एंड ही विल ऑल्सो बिकम जस्ट लाइक एनीबडी एल्स। तो जो एक उसने ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा ऑफिसर हमने पाया है जो कर रहा है, ही विल कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, सो वी विल लूज हिम, ही विल नॉट बी सो एथिकल लेटर ऑन। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए, हमने कहा इसको रहने दी, उन्होंने कहा वो इसको रहने देंगे तो वो काम ही नहीं करेगा कोई। हमने कहा नहीं वो मैं समझा देता हूँ उसको बुला के। तो उसको फिर मैंने बुला के समझाया, मैंने कहा देखो तो ऐसा है, तुम क्यों करते हो ऐसा। तो वो कहने लगे सर सब बेईमान है, सर सब बेईमान है। मैंने कहा ठीक है सब बेईमान, बहुत अच्छी बात है, सब बेईमान है तो बहुत अच्छी बात है, तुम ईमानदार हो, सब बेईमान है। मेरा पॉइंट इज दिस इज नॉट हाउ योर जॉब एज अ सिविल सर्वेंट इज ऑल्सो टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइजेशन को रन भी करना है, आप सब जगह बंद करा दोगे सब कुछ को, काम ही बंद हो जाएगा तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। एंड सेकेंडली हमने कहा नेवर मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि सब बेईमान है, ऐसा नहीं है। और आप थोड़ा सा उसको देख के चलो सबको, कौन कैसा है क्या नहीं है, एंड यू डोंट हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट एवरीबॉडी। तो मैंने उसको फिर काउंसिल किया, मैंने कहा देखो तुमको करप्शन अगर करना है कंट्रोल, तो बेस्ट तरीका ये है, जिसको मैं भी करता हूँ अपने लिस्ट में, वो जाने के बाद यू आइडेंटिफाई हु आर द 2-3 मेन पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द करप्शन एंड टेक एक्शन अगेंस्ट दोस 2-3 मेन पीपल। यू डोंट हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट एवरीबॉडी। और जो 2-3 मेन पीपल के अगेंस्ट आपने एक्शन ले लिया, दैट सेंड्स अ मैसेज डाउन द लाइन। वो जो होता है ना वो स्केयर करो वाला, खेत में जो लगा रहता है ना, उसको देख के सब कौवे भाग जाते हैं ना, तो वही वाली बात की आप 2-3 को टांग दो बिल्कुल, जैसे कहते हैं एक्शन लेके, देन एवरीबॉडी एल्स विल बिकम अफ्रेड, दे विल नॉट इंडल्ज इन करप्शन ऑफ एनी काइंड। तो मैंने कहा इस तरीके से करो तो फिर तुमको ऑर्गेनाइजेशन भी चला लोगे और ये भी हो जाएगा मैसेज कि यू आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट करप्शन, पीपल विल नॉट बी करप्ट। कहने का अच्छा ठीक है सर, अब ये तो ठीक, आपने ठीक बताया, मैं ऐसा ही करूंगा। और मैंने कहा अब जो है स्ट्राइक तोड़ने के लिए तुम ही बात करो, यू गो एंड टॉक टू देम एंड से ठीक है यू कम, आई विल कंसिडर केस बाय केस, जो ज्यादा करप्शन वाला केस है उसमें तो मैं एक्शन लूंगा, बाकी में मैं अभी आप लोगों को अलाउ करता हूँ। तो वो उसी ने बात कर लिया, फिर फैक्ट्री चल गई, ही कंटिन्यूड। So that is the way sometimes you have to manage things also, because as a civil servant, it is, you can't just say that I will only take action against corruption only and do nothing else. You have to get work done also. It is important. तो वो उतना टैक्ट और वो यूज करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन जिसे कहते हैं ना, तो हाउ कि सांप भी मर जाए लाठी में ना टूटे वाली बात, यू हैव टू sometimes more often than not you have to use that strategy, you have to come forward with it. So this is the situation. Now we can do another one. Time है ना? In the previous case study, what is the most appropriate option to take this report to Supreme Court rather than PIL? आप सुप्रीम कोर्ट वाला भी अच्छा ऑप्शन है बिल्कुल, और आपने जो बताया था कि दूसरे मीडिया चैनल से, सोशल मीडिया से भी जा सकते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। बोथ विल सक्सीड बिकॉज यू विल, योर आइडिया इज टू ब्रिंग इट आउट इन पब्लिक सो दैट दिस मेनेस इज कंट्रोल्ड। बट यस, दूसरे चैनल्स भी हो सकता है क्योंकि लोकल एमएलए इन्वॉल्व है और काफी स्ट्रॉन्ग पीपल इन्वॉल्व है, तो दे मे नॉट टेक एक्शन, दे मे नॉट पब्लिश। वो ये न्यूज़पेपर्स भी और जो है टीवी चैनल्स भी, अभी भी ये हाल है कि कोई चीज जो बहुत अगेंस्ट होती है उसको ये लोग नहीं छापते, नहीं दिखाते। दिस इज नहीं सर, इसको तो हम नहीं दिखा पाएंगे, हमारा मैनेजमेंट नहीं अलाउ कर रहा है, और समथिंग लाइक दैट दे विल से। लाइक स्पेशली अगेंस्ट द गवर्नमेंट दे विल जनरली नॉट से एनीथिंग इजीली, बिकॉज उनकी भी इंटरेस्ट रहता है ना, उनको पेपर चलाना है, अपना सब चलाना है, दे विल नॉट लाइक टू डू एनीथिंग व्हिच इज टोटली अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये सब चीजें होती है। तो इन दैट केस कोर्ट ऑफ कोर्स इज क्वाइट इंडिपेंडेंट, एब्सोल्युटली। तो उनकी इंडिपेंडेंस है, दे आर नॉट वरीड और स्केयर्ड विद एनीबॉडी ऑफ एनीबॉडी, दे कैन टेक एक्शन। और क्योंकि उसने द एग्जामिनर हैज मेंशन्ड सुप्रीम कोर्ट,
इन दी थिंग डिलिबरेटली, जरूरत नहीं थी मेंशन करने की लेकिन मेंशन किया है, एंड हैज बैंड इलीगल माइनिंग भी मेंशन किया है, तो एक तरीके से मे बी ही इज गिविंग अ क्लू, द एग्जामिनर इज गिविंग अ क्लू कि हाँ ये आंसर जो है ये हो सकता है बेटर, so this I think would be the better answer to go by in this situation. One more thing, now that the CMD also knows about the 𝘀𝗲𝗰𝗁𝗲, what the original journalist used to know. So now that two people are knowing, so the immunity factor, like if it gets to the media to some or the other way or to the court by the person, then the immunity gets compromised. So in order to get his immunity not compromised, he has to consult with the person that is the CMD. That now that we both have to send this to the court anonymously and we both have to act as if nothing has happened. Because if I am gone, I take your name as well. And he can take the hike, he can take the... No, but the point will always happen that CMD may also not be willing to have a compromise with him or come on his side. We can see the thought process of the CMD. He went to him, not to the MLA. Because he was thinking he has some humanistic aspect. He thinks of his immunity. No, he did not. He did not. You're right. He did not go to the MLA. He did not complain against this person. He did not leak the report. What you are trying to say is that he did not leak the report, but he only said कि इसको चुप रहो, हाँ, and I will give you this money. But अब वो कोर्ट जाने के लिए अगर उससे कहेगा कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ ना, तो हाँ, एनोनिमस में भी कुछ नहीं होता जनरली. You see, anonymous, if you send a complaint to anywhere, तो वो घूम घाम के उसमें एक there is another rule in the government that anonymous complaints are not acted upon. वो भी होगा, फिर भी वो anonymous को वो लेते नहीं है उसमें, कि ये माना जाता है कि ये मतलब वो अलग बात है कि जैसे कोई whistle blower टाइप की सिचुएशन हो गई and cognizance can be taken, but generally चांस ये भी रहता है कि cognizance ना लें लोग, because anonymous में वो अगर ऊपर वाले चाहें तो उसको दबा लेते हैं. हाँ नहीं, वो उसमें वो तो ठीक है, बट इट इज रियली बेटर अगर ये PIL ही फाइल कर दे कोर्ट में. हाँ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा उसमें. यू कैन फाइल द PIL. हाँ, यू कैन फाइल द PIL. वैसे मैंने कहा कि अपने आप सामने ना आए, कैन डू इट थ्रू अ लॉयर. गिव दिस इंफॉर्मेशन टू अ लॉयर हु विल फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. हाँ, यू कैन फाइल दैट. अगर अपना नाम नहीं भी देना चाहता है, you can do that also. Now we have time for some more. Yes, we can do one more. Next one. चलो यार. Okay. This one is we have done MBA from a reputed institution 3 years back. हाँ ये वाला. Okay, but you have not got campus placement due to COVID-19. But then you have gone through a lot of selection process to get a job in a leading shoe company. Then again same, but the questions जो हैं बड़े similar हैं. देखिए, वो personal dilemma को सामने डाल देते हैं. There are some personal issues. The main point in every question is your personal interest versus public interest. वो हर question में लाते हैं. देखिए, फट से उसने डाला. You have aged parents who are dependent on staying with you. You are recently married. After getting this decent job, you will be allotted inspection section responsible for clearing the final product. मतलब आपके personal issues हैं. You need a job badly. You need money. You need a job. तो उस समय आपको फिर inspection section दे दिया. In 1 year, you learned your job well and were appreciated by everybody. You're doing very well. The company is doing business for last 5 years in domestic market, and this year it is decided even to export. ठीक है? डोमेस्टिक में भी अच्छा कर रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है. कंपनी इज डूइंग वेरी वेल. However, one large consignment to Europe, export part में, was rejected by the team due to certain poor quality and was sent back. Export में तो आप जानते हैं ना, especially the European countries and USA and all, they're very strict about quality standards. They don't accept any product which is not conforming to their standard of quality, and you can't do anything about that. They have very strict rules. तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. The top management ordered that consignment to be cleared for the domestic market. अब एक्सपोर्ट में रिजेक्ट हो गया, meaning it is not up to the, yes, it is not meeting the quality standards. But what could be the option available before these people? कि भाई या तो उसको रिजेक्ट कर दें, जो रिजेक्ट हो गया उसको हटा दें, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं तो इंप्रूव कर लें, और नहीं कर सकते हैं तो रिजेक्ट करके हटा दिया. ऐसे होता है ना कि
और नया प्रोडक्ट बनाया. That is the two options available. If you can improve upon it, you improve it. Otherwise, you throw it away. तो हो जाता है, उतना लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा. You bear that loss. But what the company's top management is saying, वहाँ नहीं तो डोमेस्टिक में डाल दो. ये वो तरीका होता है ना कि यहाँ तो किसी को कुछ भी दे दो ले लेंगे. हाँ, नहीं, India also we are not very conscious of quality as such. India, the consumer, or we are not so conscious of quality, we accept anything. वो आप कुछ भी आप कहिए, वो जो प्रोडक्ट दे दिया, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलता है. तो दैट इज नॉट देयर. तो उन्होंने सोचा डोमेस्टिक मार्केट में इतना स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है और पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट, तो यहाँ दे दो. इंटरनेशनल को छोड़ो, क्योंकि इंटरनेशनल में दे डोंट वांट टू स्पॉइल देयर इमेज. दे कांट डू एनीथिंग अबाउट. दे विल हैव टू सेंड अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, बिकॉज इफ दे आर एक्सपोर्टिंग then they must have a reputation in the market, and in fact they will have to take steps to see that in future no such consignment is sent there, because then it gives a bad name or image to the company, and if several such consignments are rejected, then the company will not be able to survive. Correct. So that is one part. They will look out of the export market, but they are pushing this product in the domestic market. As a part of the inspective team, you that glaring poor quality is there, and you bring it to the knowledge of the team commander, or the top management advises all the members of the team to overlook these defects. Inspection team में है ये, and the top management tells the inspecting team to overlook. Don't bother about these defects. Don't mention them. Though he is a part of the inspecting team, what is his duty? To inspect the product. And point out whether it is of the right quality or not of the right quality. That is his job. He is being paid for that. But the top management is saying कि नहीं यार ये सब मत लिखना, इसको चला दो, because वो लॉस से बचना चाहते हैं. हाँ, rest of the team members except you promptly signed, cleared the consent. Now your team members are there. बाकी सबने साइन कर दिया, लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं. They agree to that, but you are wondering what you should do. You are so conscientious. You are an ethical person. You again go to the team captain, commander, and reputation of the company, that this will be against the reputation of the company in the long run. If we send a product of poor quality, the people will realize that the product is not of that quality, even if चल जाता है, चल जाएगा, but still they will realize. So that will damage the reputation. What happens? If you get a product of a company and you find it is not of a good quality, in future you will not buy products of that company. So it damages your reputation. The consumer will not take that product in future. So he is doing the right thing. Here इनका action जो था ये सही था. कि इसने दोबारा गए कमांडर के पास कि नहीं सर ये ऐसा मत करिए, because this will damage the reputation in the domestic market also. Then what happened? But वो top management क्या कहता है? No, कर दीजिए, otherwise we will terminate your services. किसी और रीजन से we will terminate your services. तो अब ये बहुत डेंजरस मामला हो गया. उसको तो बड़ी मुश्किल से प्लेसमेंट मिला, और प्लेसमेंट मिला because and then he has certain personal issues also, and the company says will terminate on some other reason. और कहीं कोई terminate हो जाता है तो getting a new job is also difficult, because record में अगर ये आ गया कि terminate हो गए for reasons, कोई reason बता दिया, कह दिया कि साहब ये तो he was involved in corruption or that he is incompetent or something करके reason बता के आपको terminate कर दिया, and that people in the market get to know but he has been thrown out from that company. When you go for an interview to some other company also, they will also not be willing to select you easily. वो सोचेंगे पता नहीं there is something wrong with this person. So this is a dilemma. This is the dilemma before you. वो पूछ भी रहा है, what are the ethical dilemmas being faced by you and the conditions? What should you do? What are the options available? So again, now what are the options available? Look the defect and pass the product. Just like other people have done. Other team members have already done it. He also says, yeah, मैं भी दस्तखत कर देता हूँ. And others are signing, so I am also signing. But will this option be acceptable? This is unethical, because he is doing something which is against his duty as an inspecting team member, and it is against the interest of the company also eventually, and against his own job also. So he says no, ये तो हमको नहीं करना है. Then what is the option available? Does he Refuse the company instruction and refuse to pass the product? This option is there. And third could be again, as you might say, that he can, option before him is ठीक है ये कंपनी नहीं कर रही है तो मैं, because he knows that if he refuses to do it, he has been threatened, he can be thrown out. Then third option could be कहते हैं कि मैं resign कर लेता हूँ कंपनी से, मैं चला जाता हूँ, है ना, लेकिन मैं इसको पास नहीं करूँगा. But then resign वाला option also is not a correct option. Get the job after so long. One thing, and second is ethics says that you don't run away from a problem. You should not run away from a problem. You should be able to face a problem and handle it. You should not run away and say कि नहीं साबित हो गया. वो तो भागने का तरीका तो है कि हम रिजाइन कर दिए.
पर रिजाइन करने से क्या होगा कि यू आर रनिंग अवे, नंबर 2 वो प्रोडक्ट वो किसी और से पास करा के भेज देंगे, वो प्रोडक्ट तो मार्केट में आ ही जाएगा, तो यू आर नॉट एबल टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग कि अ सब स्टैंडर्ड और अ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट कम्स इनटू द मार्केट, राइट। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो he can try once again, that is one option available, and maybe जो कह रहे हैं कि it is the longer interest of the company, इस बात को यहाँ पे ये ट्राई कर सकता है to even go beyond his immediate superior also, ये कहने के लिए साहब ये कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं होगा लॉन्गर रन में, हो सकता है कोई सीनियर लेवल पे आदमी इसको सुन ले। और आजकल तो एक ये हो गया है ना, हियर वन थिंग कम्स इन, ये आपके कोर्स में है एथिक्स में, विसल ब्लोअर एक्ट, देयर इज अ विसल ब्लोअर एक्ट। विसल ब्लोअर एक्ट क्या होता है, सुना है आपने कभी? विसल ब्लोअर, सीटी बजाने वाला, विसल ब्लोअर मीनिंग दैट मतलब who you working in a company, you find something wrong is taking place, हाँ उसके लिए you raise your voice, you but if you indicate your name then people will take action against you, so you don't do that. Whistleblower doesn't indicate that there is a provision in a company कि whistleblower को, बल्कि जो भी कंपनीज होती हैं उनको बताना पड़ता है कि whistleblower रूल्स आपके यहाँ हैं कि नहीं है और उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। तो एज अ whistleblower उसने अगर कंप्लेन करी तो आप उसके नाम को पब्लिक नहीं करेंगे, बट यू टेक केयर ऑफ दैट कंप्लेंट, सो हायर अप्स के सामने जो टॉप मैनेजमेंट है, बोर्ड के सामने वो बात आ जाएगी। तो अगर टॉप मैनेजमेंट के सामने आएगी तो टॉप मैनेजमेंट आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली विल रियलाइज कि अरे यार ये तो लॉन्ग टर्म के लिए सही बात कह रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो जो कंसर्न ऑफिसर है, टीम कमांडर, वो गड़बड़ आदमी है, ही इज नॉट डूइंग हिज जॉब, so in fact he may take action against the team commander and agree with what he is saying. In fact मुझे तो लग रहा है कि इसमें ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज क्योंकि लड़ना और हर तरह ये होना कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना भी वेरी ऑफन इज नॉट द बेस्ट आंसर ना, कि आपने कहा नहीं साहब मैं तो नहीं करता साइन, होने का चलो बाहर जाओ, यू टर्मिनेटेड, तो नथिंग मच इज अचीव्ड इन टर्मिनेशन ऑल्सो। दिस मे बी अ बेटर ऑप्शन दैट इफ यू यूज ये, क्योंकि एथिकल उसमें अलाउड है विसल ब्लोअर वाले में, इट इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स विसल ब्लोअर एक्ट, तो विसल ब्लोअर का जब अलाउड है तो एज अ विसल ब्लोअर यू कैन सेंड अ कंप्लेंट टू द हायर अप्स। नहीं तो जैसे कई जगह और भी होता है, ऑम्बुड्समैन होते हैं कई जगह कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने ऑम्बुड्समैन को भेज दिया जो कि फेयर तरीके से वो कर देगा, बट ही शुड नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज हुई तो यू आर सेफ। और बल्कि अब तो कंपनीज से हम डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कपल ऑफ कंपनीज, तो वहाँ बोर्ड में ये वगैरह आता है, एनी कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी विसल ब्लोअर, उसमें लिखना पड़ता है नो या यस, अगर यस आया है तो व्हाट एक्शन टेकन ऑन दैट कंप्लेंट एंड इट इज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द बोर्ड कि ये कंप्लेंट थी, इसमें ये एक्शन हुआ, एंड बोर्ड आल्सो देन डिसाइड्स वेदर प्रॉपर एक्शन हैज बीन टेकन और नॉट टेकन। सो दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस व्हिच इज अवेलेबल हियर, वेयर यू कैन सेव योर जॉब आल्सो एंड आल्सो गेट द रियल थिंग डन। और टीम कमांडर को जब डांट पड़ जाएगी, हटा दिया जाएगा, तो फ्यूचर के लिए भी कोई आपके ऊपर प्रेशराइज करने वाला नहीं होगा टू डू द रॉन्ग थिंग। तो दिस इज द सिचुएशन। तो एक चीज इसमें ध्यान रखिए, जब एथिक्स वाले में आंसर करिए, think a little bit, don't always give the obvious answer is to say that I will not do the wrong thing, है ना, अब मैं लड़ जाऊंगा, पर लड़ना is also not the best answer. Think of an alternative where you can achieve your goal. जैसे उसमें बताया कि कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट, इसमें आया कि विसल ब्लोअर वाला यूज कर लो। How you can achieve your objective without getting into a direct fight or compromising everything or getting into personal trouble also. But sometimes if it is not possible, then there is no option. Then you have to go for that. It's always better to do that than compromising. Yeah. But actually, for a company of the brand recognition of the brand is very much important. Being a quality control manager, the first task would be to top us one of them, make them understand over the right direction that the product needs a little bit of augmentation. As it's mentioned, the clearing might be the shining shoe, the shinings of the shoes would not be at that particular level. The company would be demanding it in US. So what we can do is we can rebrand the product and we can give the product at a discounted price, so that the brand is also not negotiated and the image and the recognition in the mind of the people is also maintained. That is done by certain companies also. If you must have seen, seconds होता है ना, कंपनी में कई चीजें वो बेचते हैं, यूएस वगैरह में ये ब्रांड, रीबॉक में भी आपको मिल जाएगा, रीबॉक का शू आपको ओरिजिनल शू मिलेगा 10,000 का और सेकंड्स का शू मिल जाएगा 3,000 का, और आप सेकंड्स का शू देखिए, आपको यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज देयर इज एनी डिफेक्ट, बट वो वेरी केयरफुली आप देखिए तो मालूम पड़ेगा वो कहीं पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, स्मॉल प्रॉब्लम इज देयर बिकॉज ऑफ व्हिच इट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल,
but they sell it as seconds. मतलब वो झूठ नहीं बोल रहे हैं कंज्यूमर से. This is not unethical. They are not telling lies to the consumer. They are telling the consumer that this is a faulty product. फैक्ट्री आउटलेट में बेचते हैं सेकंड्स में, पर इसमें डिफेक्ट है, आप देख लीजिए, आप लेना चाहो तो ले लो, हम कम दाम पे आपको दे दें. इफ यू अप टू योर चॉइस, इफ यू वांट टू टेक, आई एम नॉट चीटिंग यू बाय सेइंग कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और आप ले लो. आई एम टेलिंग यू इसमें डिफेक्ट है, डिफेक्ट ही बता दिया कि साहब ये डिफेक्ट है, देख लीजिए, आपको लेना हो तो ले लीजिए. तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन. तो यू हैव टू थिंक इंटेलिजेंटली ऑन हाउ टू सॉल्व अ सिचुएशन लाइक दैट. और अगर आप टॉप मैनेजमेंट के साथ बताएंगे जैसा आप कह रहे हैं, यस दे माइट एग्री ऑल्सो, हाँ ठीक कह रहा है. आपका कमांडर ना एग्री कर रहा हो तो और लोग जो हैं उनसे अगर आप बात करते हैं, अपॉइंटमेंट लेके चले जाते हैं, तो ये माइट एग्री, भाई बात तो ये लड़का ठीक कह रहा है, इज राइट. इसमें आवर ब्रांड इमेज विल बी प्रिजर्व्ड आल्सो एंड वी विल नॉट सफर मच लॉसेस एंड मे बी लिटिल लॉस. डिस्काउंट में तो वैसे भी बेचते हैं चीज़ों को, तो थोड़ा बहुत. हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस भी कर देते हैं, ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है. तो दिस द वे, मतलब थिंक ऑफ ऑल द वेरियस वेज. अगर आप जितना क्रिएटिवली इंटेलिजेंटली सोच के कोई ऑप्शन अगर दे देंगे वहां ना आंसर में, दैट विल हेल्प यू गेटिंग बेटर और हायर मार्क्स. खाली ब्लंट नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा बस यही करूंगा, वो भी नहीं. कभी कभी सोचना पड़ता है कि और भी क्या हो सकता है, व्हाट इज अदर ऑप्शन. तो उसको सोचने के लिए उसमें आपने जो थ्योरी पढ़ी है अपनी एथिक्स की, उसको भी आप सोच सकते हैं कौन सा कोई प्रिंसिपल ऐसा है जिसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ क्या, या कोई रियल लाइफ सिचुएशन जो आपका ओन एक्सपीरियंस हो, जैसे आप बता रहे हैं अबाउट शू कंपनी, हाउ यू कैन ब्रिंग इट इन हियर. So that kind of thing is out here. So this way you can handle this situation. So I think this is also very clear, no? This is about case study. एक और कर लीजिए क्या? लास्ट कर लेते हैं, हाँ? चलिए. ज़्यादा थक रहे हो तो बता दीजिएगा. तो ये तो इसमें थकान नहीं हो रही होगी ना? If it is only one way traffic तो आपको हो रही होती है. अब तो we are all discussing it together. Okay, now somebody read this. Or tell me about this case. Anybody? Rakesh was working as a joint commissioner in a transport department. किसी ने पढ़ा हो तो बता दे, या पढ़ के बता दे. है किसी के पास? ये इसी में बोल रहे. You can read from this. Please tell me. And this truck collides with a car. And what happens is they end up in a scuffle. So what happens is, as per the people who have actually witnessed that particular thing, the police was instantly there after a few minutes. So what actually happened was the driver used the handcuffs on the person who was driving the car. So both ended up beating themselves and they both ended up in hospital. So the driver lost his life. The driver of the transport department bus? Yes. And the other person, he was 1 or 2 days, I guess, he was relieved from the hospital. So the next thing which happened was the FIR was lodged and this man, the one who died, had a wife and 2 girl children, school college. So now that the situation is in the family, no one is earning, he was the only one who is earning. The people of this union, the transport department, they're on the strike. So the buses are off service. So the public is facing issues. Now you as an officer have to take a decision in which the trade union also gets satisfied and the justice is served to the family that is faced. Right. So now, as you rightly said, there was a transport department bus was there. The driver was driving the bus. He got into a fight with one of the other drivers. हो गया होगा थोड़ा बहुत टक्कर हो गई होगी, something must have happened. And in that he was the person who hit. The driver of the bus was the person who hit the other person. This the police is saying. Police records are saying that. Police investigation is saying that, because police came to the spot immediately and they asked everybody, so they know that he was the person who was involved in the assault. और assault किया, लेकिन जब when there was a fight, he got injured and he ultimately died. So when he died, so there are rules in government. If you die while you are on duty, or he was on duty, पहले बताइए. He was on duty. He was driving a bus at that time. So if you die when you are on duty, then compensation is given to your family. The compensation is in the form of that one member of the family can be given a job, or some compensation package is there also, which is also given along to you. This the management was not giving.
Why the management is not giving? Because it says कि तुम्ही ने तो लड़ाई करी, इसी ने मारा है, तो अब क्या है? But the point is कि he has a family also and they were suffering. So obviously the unions, labor union is fighting, they go on strike also. अब labor union strike पे भी चले गए हैं. Now various issues कि labor union strike पे चले गए हैं, that is affecting the working of the department. So now you have to take a decision. One is, what options are there? One negotiate with the labor union that the compensation has to be divided with two people. The other one also was dead. If he knows that he can kill a person by death, so he should have avoided that person. So he undoubtedly would be under this debt that he has taken a life of one particular person. So in order to repay his dues, so he can also give the 50% compensation, and that will take time. So till then time, please carry forward the work. So this is the time I assure that the job will be given to the lady in due course of time. Because it takes a lot of time to get the paperwork done and the job is not done. Right. But what you're saying is you convince the other person to pay some part of the compensation. But then the other person is not a transport department officer, isn't it? He is not a part of transport department, so he may not agree to what you are saying. He said, why? No, here the compensation has to be given by the transport department, so that this person will not pay the transport department or anything. That is all the different matter. Police case is going on, so police may take any action they take in the case. Police case is there. लेकिन पुलिस भी ये कहेगी कि साहब वो तो एक्सीडेंटल डेथ हो गई है ना, उसमें जो भी एक्शन बनता है वो बन जाएगा उसके खिलाफ. That action is there, but asking him to give compensation might be a little difficult. So now how else will you tackle? What are the other options? लेबर यूनियन के भी लोग हो और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी लोग हो, उसमें वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए और वो मतलब विन-विन सिचुएशन हो जाए. हाँ, कमिटी आप बना लीजिए, but committee will have to give a decision. You know, committee will have to give a decision. What? The point is that will be acceptable to both the parties. But what can be acceptable to both the parties? इसमें issue क्या आ रहा है ना मेन वाला कि he is the person who hit out. He did the wrong thing himself. ये तो उसी तरीके की चीज हो गई ना. ये कभी-कभी एक ऐसे भी केस पहले भी आया हुआ है इसी में सिविल सर्विस में. वो कहते हैं that labor working in a factory, he was drunk. He was not supposed to be drunk, but he was drunk. So because he was drunk, he died in an accident. He was not in his senses. He died in the accident. So company was not paying compensation. Saying कि साहब वो तो अपनी गलती से हुआ. He was drunk. He was not supposed to be drinking in the job. So if he was drunk, so he died. But then the union and others went on strike. तो अब इसमें बड़ा complicated सा है ये वाला. इसमें because there one side is that he. Now अब ये भी बात आती है ना. Will you treat him as being on duty is the first thing. He's driving the bus. But he got down from the bus and started fighting with somebody. तो उतर के जाके लड़ने लगा. वो तो उसके पार्ट ऑफ द ड्यूटी नहीं थे. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यही मैनेजमेंट भी कह रहा होगा ना. भाई तुमको अगर टक्कर हो गई थी कुछ थी तुम आके बताते कंप्लेन करते. बट यू आर गॉट डाउन एंड स्टार्टेड फाइटिंग. दैट इज स्ट्रिक्टली नॉट पार्ट ऑफ योर जॉब रियली. सो कंपेंसेशन इज ओनली गिवन व्हेन something happens to you while you're on your job. So that is the first issue. Whether you will consider him to be on the job or not on the job. Second issue है भाई उसके family है and they are suffering. And the rule is there कि if somebody dies on if you consider that he was on duty, which you can consider, if you consider he was on duty, then you have to pay that compensation. लेकिन उसमें बात ये आ रही है कि भाई इसी ने सबसे पहले मारा. अब क्या होगा? क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट इसीलिए नहीं दे रहा है. Management is saying that you are the person who started the fight, and because of that you died. So they are not. I think why the management is not giving is, one, they are not treating him on duty, and second, they are saying that whatever happened was started by you. You are responsible for it. So it is not the responsibility of the transport department. So we are not going to pay you. Option is that they stick to the stand and say we will not pay you. If they do not pay or do not give a job, the strike is going to continue. And they're losing money and they're losing transport is not being available to the people. It's a big situation has arisen. Labor unions जब strike कर देती हैं, they don't withdraw also with something. It's very difficult unless आप force use करें. आप कहते हैं ठीक है आप strike को हम तोड़ देंगे force से. There is one option over that your transport department is part of government. So you call the police, you call the other people, and then you break the strike by using force. That is also possible, but then it is not always a solution which is a very good one at that moment. कि आपने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर ली, लाठीचार्ज कर दिया, समथिंग कर दिया. You may be able to break the strike immediately, but
again something will happen. It will come back to you again, or they may go just now, but again they come back on strike again because they want to support that labor fellow because he is part of their family. The labor unions will always support a labor union leader. तो ये एक ऑप्शन तो यही कि आप पुलिस फोर्स बुला के तोड़ दीजिए स्ट्राइक को, अगर हम नहीं देंगे. बट यहाँ पे पॉइंट आती है जो है पॉइंट अबाउट व्हाट दे से अबाउट इन योर कोर्स आल्सो इन एथिक्स, इट इज देयर इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन. तो एम्पैथी कंपैशन इसमें क्या कह रहा है? एम्पैथी कंपैशन कह रहा है भाई इसके परिवार ने सफर कर जाएगा, दे देंगे तो इट विल बी अ गुड थिंग टू डू आल्सो. दिस आल्सो थिंग विल कम इन योर माइंड, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, कि ये भी है एक एंगल से इसको देखने की सिचुएशन दैट ठीक है कंपनसेशन दे दिया जाए व्हाटएवर इज डिजायर्ड एंड द जॉब आल्सो, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज अ ड्राइवर. एंड जो हुआ लड़ाई झगड़ा हुआ तो लड़ाई झगड़े में अब कोई जानबूझ के थोड़ी मर गया. इट जस्ट हैपेंड दैट इट वाज एक्सीडेंटल डेथ. So it was accidental death, it has happened, so his family is suffering, so you can take that view that no, he should be paid the compensation. This way the strike will be called off also. अब ये बात है, अब ये देखने की बात है कि will that be viewed as a weakness, कि आपने कोई गलत काम कर दिया देखे तो strictly as per rules शायद ये नहीं हो रहा है. If you go strictly as per rules, then that compensation is not admissible because one is not exactly on duty, वो तो उतर की लड़ाई कर रहा है, और दूसरा उसी ने पहले हाथ पैर चलाया, पुलिस रिपोर्ट में भी ये बात आ गई, he has hit the other person, you know, and then in the process he died accidentally. So that strictly doesn't come under the rules of giving compensation. But here the management has to take a view that how ethically or emotionally you feel that empathy and feel for his family and do this thing. This might give a very good signal to the labor also and make them work better in future. If you don't give it to them, they will become angry. If we use police force and take action, but labor will be angry, they will not be productive enough, they will not perform. So if you do this, मेरी अपनी thinking ये, अब again हो सकता है आंसर आपका कोई दूसरा भी हो सकता है. In examination paper you can say कि नहीं देंगे साहब, and we will break the strike. You know, this is also an answer. My view, if I was a manager, I would give the answer कि नहीं इसको दे दें, but with some conditions लगा के उसमें कुछ कम करके दे सकते हैं, कुछ करके दे सकते हैं, कंपनसेशन की वैल्यू को कम कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए ये कर दें कि साहब जो है इस टाइप की चीज़ों पे हम लोग वी विल टेक दिस काइंड ऑफ स्टैंड. ये लेबर से यूनियन से बैठ के एग्रीमेंट कर लिया जाए, यू विल नॉट रेज दिस काइंड ऑफ इश्यूज इन फ्यूचर इफ दिस हैपेंस, बट दिस टाइम लुकिंग एट हिज फैमिली एंड ऑल वी गिव दिस कंसिडरेशन फॉर हिम. दिस डिपार्टमेंट की तरफ से करके दे सकते हैं उनकी फैमिली को, क्योंकि बिकॉज़ ही इज द ओनली अर्नर ऑफ. हाँ, वही एक कंसर्न है जो एग्जामिनर ने कहा है, ही इज द ओनली अर्नर. अगर उसको आप नहीं दे रहे हैं, वो ही इज गॉन, ही इज डाइड, आफ्टर ऑल ही वाज योर एम्प्लॉय, ही हैज सर्व्ड यू फॉर सो मेनी इयर्स. So that is why I was thinking that it may be a better thing for the department to somehow arrange for and give him that kind of compensation. So कम से कम वो फैमिली भी ठीक हो जाएगी, स्ट्राइक भी कॉल ऑफ हो जाएगा, और लेबर भी फ्यूचर के लिए आपके लिए लॉयल रहेगा. You will know that the management is or department is caring for us. So this kind of a situation. So here ethics के साथ आ गया इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बात थोड़ी सी, about your empathy, how you feel for the other person, and sometimes you have to relax the rules in life also. रूल्स होते हैं, फॉलो करने हैं, बट समटाइम्स आपको ह्यूमन बीइंग को भी देखना पड़ता है रूल के पीछे, एंड वेयर यू कैन, यू आर नॉट डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग एक्चुअली, वो आप बिल्कुल कोई गलत चीज कर रहे हैं तब नहीं करना चाहिए, बट हियर यू आर नॉट, द डिपार्टमेंट इज नॉट डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग. इफ ए पर्सन डाइज ऑन ड्यूटी तो आपको कंपनसेशन देना ही पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा उसको ड्यूटी पे ही मानना पड़ेगा, बस दैट इज ऑल. और ये मानना पड़ेगा कि वो अपनी गलती से उसकी डेथ नहीं हुई, बट इट वाज एन एक्सीडेंटल डेथ. ये दो चीज, एक्सीडेंटल डेथ हुई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जरा सा फैक्टर यही है कि वो जो लड़ाई करने लगे साहब, वो तो उसको आपको मानना पड़ेगा भाई वो ही इज स्टिल ऑन ड्यूटी बिकॉज ही वाज ड्राइविंग अ बस एंड दिस थिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट. तो एक वो व्यू लेने की बात है, पर ये व्यू अगर आप लेते हैं तो ये एक पॉजिटिव व्यू हो सकता है इन दैट लाइट. सो बट अगेन एज आई सेड, इसमें देयर कैन बी टू आंसर्स इन दिस क्वेश्चन. वन इज व्हाट आई एम सेइंग एंड वन इज यू से दैट डोंट एग्री, वी विल ब्रेक द स्ट्राइक, कॉल द पुलिस, कॉल द मजिस्ट्रेट एंड वी ब्रेक द स्ट्राइक एंड सेड कि रूल्स आर रूल्स, वी विल नॉट एग्री. तो अल्टीमेटली स्ट्राइक फिर टूटता ही टूटता है. हाउ लॉन्ग कैन पीपल गो ऑन स्ट्राइक? वो तो ये हम लोग भी करा करते थे जब स्ट्राइक होती थी, यू स्टार्ट सस्पेंडिंग पीपल, यू स्टार्ट टर्मिनेटिंग पीपल. जहां आपने करना शुरू कर दिया वो पुलिस फोर्स लगा दी, और जो लॉयल वर्कर्स हैं वो आने लगे तो उनको आपने काम पे भेजना शुरू कर दिया, गिविंग देम पुलिस प्रोटेक्शन. धीरे धीरे करके 5-8-10 दिन में स्ट्राइक टूट भी जाता है. दिस आल्सो हैपन, बट देन दैट गिव्स अ डिफरेंट इमेज ऑफ योर मैनेजमेंट, दैट यस यू आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड यू आर नॉट विलिंग टू रिलैक्स ऑन रूल्स, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट कंसिडर्ड द फैमिली, यू आर नॉट कंसिडर्ड द व्हाट द फैमिली इज गोइंग टू फेस. जो वो बेचारे वो हैं, आपने बहुत ही थोड़ा मतलब आपने ह्यूमन बीइंग को नहीं फैक्टर किया.
आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली एज पर द रूल बुक चले गए. So here that, as I am saying, both answers are possible, but whatever answer you give, you will have to justify that why you are saying that this is the right answer. मेरा अपना आंसर तो ये होगा कि दे देना चाहिए, आपका आंसर हो सकता है थोड़ा फर्क हो सकता है, बट दैट डिपेंडिंग अपॉन दैट सिचुएशन. बट इन एनी केस सही मार्क्स लाने के लिए आपको सारे इश्यूज हाईलाइट कर देने पड़ेंगे. These are the options and these are the issues involved. What is the dilemma? These are the issues. तो सारे issues को आप लिस्ट आउट कर लें and critically examine each of the options जो लिखा है उसने. Examine each of the options and then give your solution to why you particularly want to go for a solution. तो ये ऐसा कई क्वेश्चंस में आ सकता है एग्जामिनेशन में, that the answer two people may write is different. Exact answer जरूरी नहीं है कि एक ही हो, है ना, फर्क भी हो सकता है आंसर. But you have to give proper justification. And justification will show what your thinking is, what your mental thinking is, what your attitude is, ethical attitude आपका क्या है. वो justification से एग्जामिनर को पता चलेगा. On that basis you are going to get marks. इसको ध्यान रखने की जरूरत है. You get the point? So now इसको आप लोग कुछ ट्राई करिए, एक आधे को लिख डालिए. Why don't you write out 1 or 2 case studies? लिख के प्रैक्टिस करके देखिए. Then you see कैसा वर्कआउट होता है. बिना लिखे नहीं समझ में आएगा. 250 वर्ड्स में ही लिख के देखिए. इसका तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. यू कैन से एक बचा है तो एक बचा है वो ले लीजिए, या 2021 के पेपर से ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, एक दो केस स्टडी ले लीजिए, उसको राइट इट आउट नेक्स्ट टाइम. 21 का पेपर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम. 21 वाला ले लीजिए और उसके केस स्टडीज को चाहे एक लिखिए या 2 लिखिए, पर एटलीस्ट 2 तो लिखिए हर आदमी. 2 के आंसर लिख के देखिए. देन यू विल गेट एन आइडिया कि आपको लिखने में क्या प्रॉब्लम आता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू राइट योर आंसर. वही मैंने पहले दिन ही बताया था आपको, उस पर मार्क्स सारे डिपेंड करते हैं. तो उसको लिख के ट्राई करके देखिए. नेक्स्ट टाइम में भी हम किसी 1-2 से कहेंगे अपना आंसर पढ़ के सुनाइए. सुनाते हैं एवरीबडी विल अंडरस्टैंड कि क्या वो आप उससे एग्री कर रहे हैं, उसने जैसा लिखा है या नहीं लिखा है, या कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं. देन एवरीबडी विल लर्न हाउ टू इंप्रूव देयर आंसर. तो 21 के पेपर को ट्राई आउट करिएगा. नेक्स्ट टाइम हम लोग बैठेंगे, वी विल डिस्कस दैट, एंड मे बी कुछ थ्योरी से भी कुछ हिस्सा आपको मैं नेक्स्ट टाइम आई विल टीच यू समथिंग फ्रॉम द थ्योरी साइड ऑल्सो. हाँ, अच्छा, विच वन हैव यू रिटन? क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10. अच्छा, ठीक है. तो जैसे कोई वाला है, कौन सा वाला है 8, 9, 10 में, विच वन इज दैट? And the Supreme Court. And the next is you have done MBA. ठीक है. तो चलिए एक का लेट्स हियर यू वन बताइए, एमबीए वाला ही बताइए. क्या लिखा आपने? So option A, question number 10, as you have done MBA. As an expecting team member, he has the following option. He can overlook the defects and pass the product. He can refuse to follow the company's instruction and cannot pass the product. And the third option is he can also try to convince the top management and not to pass the product and suggest some measures to modify the product in order to maintain the company's goodwill. The second is the critical evaluation of each option. If he overlook the defects and pass the product, it will lead to the job security for him. But in contrast, he also sacrifices his integrity and moral duty towards the public. Good, yes. Second, if he refuses to follow the company instruction, then will threaten his job security. But by doing this, he maintains his moral courage and integrity. Third, if he tries to convince the management and suggest them to modify product, it may be accepted or rejected by the organization. It is a doubtful situation. Right. Then see that what is the best suited option. To convince the top management and suggest some corrective measures in order to rectify the poor quality products. It is a win-win situation for the inspecting member as he maintains his moral duty and integrity towards the customer, as well as he will also not get fired from the job if he is successful in convince the management appropriately. Then the ethical dilemma, that personal gain versus public gain, accountability to company versus accountability to customer, the moral courage versus job loss. Right. Then what is the consequences of overlooking the observation raised by the inspecting team? What are the consequences of overlooking? अगर वो नहीं ये करता है, then first is he lost the customer trust. It will tarnish the goodwill of the company, downfall in sale, and ultimately business goes in losses and dissatisfaction among customers. And it's a very good answer.
This is a very good answer. That is how it should be written. A, B, C, D, all portions she has taken into account and given separate answer, given the various options available and which option should be chosen and why, and then also the other part of the thing. And, every part she has ethical dilemma. What is the personal gain versus public gain? Dilemma is there, and then accountability to the public and the company and to yourself, and then finally that this is a good answer. Well written. Having one more question from the 𝘀𝗶𝗰𝗰𝗍 ethics paper. Please go ahead. Sir, Rajiv is an idealist. He believes that service to humanity is service to God. One day he was going for an interview for government job. He saw a severely injured person lying on a road who was asking for help. No one came forward to help. Rajiv took the injured person to the hospital and saved his life. But due to this reason, he lost the opportunity to get a government job. Comment on Rajiv's decision in the light of above circumstances. I'm not able to getting this how to approach this. This is a very difficult question, no? He has been called for UPSC interview, PCS interview. He has been called. That is sure. This is a very big thing. He has been qualified in the main paper, and he has been called for interview. He is going there, और रास्ते में he sees somebody who has suffered an accident and bleeding and in bad shape, and she needs to be rushed to the hospital immediately. Nobody is doing anything. Now, what is his duty? What can he do? अरे यार मुझे तो इंटरव्यू देना है, मैं तो जा रहा हूँ. He can rush away. The second option is he takes that woman to the hospital and get her treated. But if he goes there and gets her treated, तो point क्या होता है कि वो he misses out on his interview. If he misses out on his interview, then he loses his job. अब बार-बार थोड़ी कि अगले साल भी qualify कर ही जाएंगे. It may not happen next year. That's a very big danger, and and losing 1 year also in the process. This is a very big ethical dilemma. Personal thing versus what should be his moral duty. मॉरल ड्यूटी तो कहती है कि एक्सीडेंट वाली ड्यूटी को आपको मदद करना ही करना है. दैट्स ट्रू. बट देन अब आप सोचिए कि और क्या हो सकता है कि वो दोनों चीज मीट हो जाए. एक तरीका ये यस ये वही मारा था. दिस इज वन वे एंड दिस परहैप्स इज द बेस्ट वे कि आप पूरा टाइम ना लगा दें कि आप ही लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल और आप ही हॉस्पिटल में फिर सारा ट्रीट कर रहे हैं. आपने तुरंत उसको अटेंड किया. आपने जो भी नंबर है 110 है या एम्बुलेंस वाला 108 है या जो भी है, फट से आपने अपने मोबाइल पे उनको करा, इन्फॉर्म किया, आपने कॉल करा एम्बुलेंस और पुलिस को और उसको हैंडओवर कर दिया कि भाई इनको आप हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, या हॉस्पिटल तक आपने किस तरीके से पहुंचा दिया और वहाँ पे भी एडमिट करा दिया और एडमिट करा के आपने इनको बुला भी लिया, पुलिस को सबको इन्फॉर्म भी कर दिया और उनके घर वालों का भी नंबर अगर मिल गया वहाँ से उसके पास से कहीं उसके मोबाइल से तो उनके घर वालों को भी आपने इन्फॉर्म कर. देयर आफ्टर यू कैन गो फॉर इंटरव्यू. भाई वो थोड़ा सा हो सकता है टाइमिंग की बात आ जाए. यू मे रीच अ लिटिल लेट फॉर देयर एंड देयर यू कैन एक्सप्लेन कि हमारा ऐसा हो गया था साहब, इस वजह से मैं लेट हो गया. तो हमें तो मोस्ट प्रॉब्ली दे विल गिव यू अ चांस. ऐसा नहीं है कि वो इतना आपसे टफ हो जाएंगे आप थोड़ा लेट हो गए इस वजह से वो कर दें. तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट हो गए. So this is the way to answer this question, right? That you do your duty towards that person also by calling the police, calling the ambulance, and if possible nearest hospital अगर कोई नजदीक भी है तो वहाँ उसको डाल के टैक्सी में पहुँचवा भी दिया आपने. But thereafter then you go for your interview also because that is also important for you. और बल्कि अगर आप ये कहानी में बताएंगे तो आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांस बहुत ब्राइट हो जाएगा. It shows certain qualities. It shows that you have ethical qualities. It shows your moral qualities and shows that you are a person of responsibility. जिसको कोई भी जॉब जिम्मेदारी दी जा सकती. हाँ? Yes. There is I don't know पढ़ी होगी आप लोगों ने. There is a famous story by प्रेमचंद. उसमें एक प्रेमचंद जी की कहानी है कि वो एक राजा थे, वो उनके प्राइम मिनिस्टर की शायद डेथ हो गई या कुछ हो गई, उनको नया प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करना था. तो उन्होंने कहा मुझे कोई अच्छा आदमी चाहिए यंग, वो तो उसको कैसे सेलेक्ट किया जाए. तो उन्होंने सब जगह मांगा भाई whoever is interested can come. तो बहुत से लोग इकट्ठा होकर आ गए, हम भी बन सकते हैं. तो उन्होंने कई तरीके के टेस्ट और कंपटीशन कराए टू सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन. और फाइनली उन्होंने कहा कि अब आप लोग वहाँ पहुँचिए, आज रिजल्ट आपको बताया जाएगा. राजा साहब वहाँ बैठे होंगे, वहाँ पहुँचिए. ये लोग सब चल दिए रास्ते में पहुँचते. तो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्टीप सा वो है जगह रास्ता में, वहाँ पे एक वेरी ओल्ड किसान जो है अपना बड़ा उसका बुलक कार्ट जो है पूरी ओवरलोडेड है और वो चढ़ नहीं पा रही है. तो वो उसको बार बार धक्का दे रहा है और वो वापस गिर जा रही है, वो भी गिर जाता है, वो कार्ट पीछे आ जाती है. वो बैल भी वैसे उस पोजीशन में है कि वो भी खींच नहीं पा रहे हैं.
तो बाकी सब लोग ने देखा कि यार तो बड़ी परेशानी में है, लेकिन लोगों ने कहा अरे अब टाइम हो रहा है, वहां पहुंचना है राजा के यहाँ। वो चले गए, एक आदमी जो रुक गया, उसने उनको धक्का दे के मदद करके उसको पार करा दिया। उसके बाद वो पहुंचा थोड़ा लेट, वहां जाके उसने कहा साहब मैं थोड़ा लेट इसलिए हो गया कि वो ये थी। तो बाद में पता चला कि उन्होंने वो प्लांट किया था राजा ने जानबूझ के। दैट वाज द फाइनल टेस्ट टू सी कि आप दूसरे की मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई परेशानी में है। ये क्वालिटी राजा वांटेड टू सी इन हिज प्राइम मिनिस्टर कि ये क्वालिटी है कि नहीं है। तो वो एक्चुअली वाज पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो वो उसने जिसने कर लिया उसको उन्होंने जो है सेलेक्ट कर लिया, अपॉइंट कर लिया। सो दैट इज सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर। तो अगर आप बताएंगे ऐसी बात है तो यूपीएससी ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो गए तो आपको वो कर दें। और वैसे भी आदमी को वैसे ये तो मैं बता ही दूं कि इंटरव्यू के जब भी जाना हो तो कम से कम 1.5-2 घंटे की मार्जिन लेके जाना ही चाहिए, हमेशा जाना चाहिए। मैंने जब दिया था आईएएस का एग्जाम, मुझे याद है एक आईआईटी का लड़का था, वो भी हम दोस्त था हमारा। वो एग्जामिनेशन में अपने स्कूटर से चला आईआईटी दिल्ली से यूपीएससी जाने लगे शाहजहां रोड। लेकिन वो बहुत भक्त था हनुमान जी का, चला गया हनुमान मंदिर दर्शन कराने। और जब हनुमान मंदिर दर्शन करने चला गया वहां ट्रैफिक जैम हो गया और वहां वो फंस गया। तो वो आधे घंटे का टाइम होता है यूपीएससी में, विद इन हाफ एन आवर इफ यू रीच देन यू आर अलाउड। हाफ एन आवर के बाद आप पहुंचे तो फिर आपको अलाउ नहीं करते पेपर में। उसके आधे घंटे के ऊपर हो गया, उसको पेपर में अलाउ ही नहीं किया गया। अब नहीं अलाउ किया गया तो वो बेचारे को उसको साल ही बर्बाद हो गया। अब ये बात आती है कि तो सही काम किया गलत किया, बट चलो हनुमान जी के दर्शन करना गलत नहीं है, पर हम कहते हैं अगर करना था तो उसको थोड़ा 1 घंटा पहले चलना चाहिए था घर से, और मार्जिन देनी चाहिए थी। यू शुड ऑल्सो गिव अ मार्जिन। ये नहीं कि आप बिल्कुल आप टाइम पे ही बिल्कुल चल रहे हैं, यू गिव दैट मार्जिन। तो अगर वो मार्जिन देके चल रहा होगा तो थोड़ा बहुत एम्बुलेंस अरेंज कराने में, पुलिस अरेंज कराने में या टैक्सी में डाल के हॉस्पिटल पहुंचाने का टाइम अगर आधा घंटा लग भी जाता है तो वो उसको मिल जाएगा घर पर जो टाइम से। तो दिस इज द वे यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। यस, ओके, so we'll end this from now today at this, okay? So 21 का पेपर कर लीजिएगा अटेम्प्ट, और कोई क्वेश्चंस हो जो उसके जो थ्योरी पार्ट है वो भी देख लीजिए बुक इसका पेपर का सिलेबस का। उसमें कोई आपको एरिया लगता हो कि साहब ये वाला एरिया हमको पढ़ा दीजिए, तो आई विल टीच दैट एरिया, आई विल टेक इट अप विद यू, जस्ट गो थ्रू दैट एंड सी, ओके? एंड देन जब तक आप लोग लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। ही हैज डन राइट आउट द आंसर्स, जब लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा, then you will understand where the problem lies. Without writing you won't understand. Try and write it out. That is the only way. Let us see next class में टाइम है अभी, इतनी जल्दी नहीं होगा, तो 21 का पेपर लेके उसको लिख लीजिए फिर। ओके, थैंक यू। ये भैया निकालो। ओके, फाइन, चलो, थैंक यू, थैंक यू।
ये अभी कह रहे थे कि हम कल बनाएंगे हिंदी में पढ़िए उसके बाद नहीं यार वो बहुत बड़ी स्टोरी थी हम बोलो क्या तुम्हारी आज है कोई चाहिए क्या